Hello everyone, hello, welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. और भाई क्या ड्रामा हुआ था कल चैंपियंस लीग नाइट में। मैं तो मतलब वही ऑफ स्टेज में बता रहा था अपने पैनलिस्ट को कि आई वेटेड फॉर 90 मिनट्स, कुछ नहीं हुआ। मेसी पेनल्टी मिस किया था एंड देन बेसिकली इंजरी टाइम मुझे हुआ, आई स्लेप्ट जस्ट बिफोर दैट एंड देन मैं सुबह होके अर्ली मॉर्निंग हैड टू वॉच इट एंटायर थिंग व्हाट एवर हैपेंड। लेकिन यस, वो ड्रामा अगर आज वापस से मिल जाए दैट विल बी फैंटास्टिक। बट हाँ, ओवरऑल अंडरवेलमिंग नहीं रहे, हाई स्कोरिंग चाहूंगा मैं तो, एंड दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट इंटर मिलान वर्सेस लिवरपूल। और इसलिए टॉकिंग अबाउट दैट, आई थिंक बाय द वे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को भी शाउट आउट, दे फाइनली गॉट देयर विन। And here we have a Manchester United rival fan, in a sense, in Nitika, IndyCop. Welcome back to Almighty Blues FC. So, क्या feel है आज रात का? क्या लगता है मैच के बारे में? I'm just so excited that UCL night है and it's Liverpool versus Inter, so drama तो obviously होने वाला है, away fixture है, it'll be interesting and the best thing is इस बार इतने players हैं that it's very weird that I have to think यार midfield में किसको रखें, forward line में किसको रखें, so that is a beautiful thing. I think I don't get to do that very often, so I'm quite excited about this match going into it. Yeah. 100%. And of course, like, great to have you. And guys, जो भी check नहीं किया, come on, IndyCop is a great channel. I always say that. Do check it out. अगर आपने नहीं किया, just a press of a button. Link is in the description below. And of course, like भी कर दीजिए stream, क्योंकि the more people we have, हम ज़्यादा मस्ती करने वाले, क्योंकि yes, it's not going to be a typical preview. बहुत सारे kind of tactical analysis होंगे, but at the same time, I have some surprise in store in terms of a combined 11. And of course, we'll move on to Barcelona and lot more. But Barcelona meeting Napoli, and of course Inter Milan is there. So Inter Milan at the San Siro. Come on, like I had to get on Fateh back. Fateh, welcome back to Almighty Blues FC. What have you been up to? First of all, thanks for coming on. Yeah, it's always a pleasure to be on your show. And you mentioned the San Siro, but only 50% capacity. So last night you saw PSG full house for Real Madrid, but we in Italy do not have that luxury. Yeah, absolutely. Well said that. लेकिन वही है ना, मतलब lot of history there. अब हम बात Yeah, करेंगे. Talking about history, I think first of all, kudos to Liverpool. Like let's be honest, one of the best teams in Europe, especially Champions League में, मतलब अलग ही level. 6 games, and it pains me to say it, लेकिन it's a fact. 6 games in the Champions League, first English team, right? To win Hmm. all their 6 games. Not Yeah. just that, I think Milan, like at the San Siro, proper धो डाली थी मिलान को तो. And I think confidence booster अगर चाहिए लिवरपूल को, nothing like it. And as in दो डालने के बारे में about Champions League, let's actually welcome another guest, because yes, we have in the house Usman Bhai. Usman Bhai, great to have you. How are Hello, you? Bhai. Hello, everyone. Hello, I'm doing Usman good. How bhai. are you all? Great, Hello, great, great to everyone. have you. And of course, हम बारसा की बात बहुत करेंगे उस्मान भाई, and of course, German football that Usman भाई is also an expert of. And coming back to Liverpool, like, because that is the limelight, na. I think Nitika, correct me if I'm wrong. Liverpool actually इंटर के साथ खेली थी बहुत साल पहले in knockout stages under Benitez. Yeah. I think It Gerard happened in Torres time. 2008. Yeah. It happened at that point And of time, and the first leg happened at Anfield, and it was a 2-0 victory for Liverpool. And then we had to go to San Siro, and at there, it was the one goal that got us the win, and it was by Torres. So that is how we so won the match there. but Ankit, you must know that was a match that Roberto Mancini, the winner of the Euros, was our coach, and the World Cup winner, the notorious Marco Materazzi, got sent off within the opening 25 minutes at Anfield. Mhm. We played the Mhm. already whole game excuses with शुरू bare हो hands. गए पते के. हाँ, we played the whole match. दस आदमियों के साथ we Yeah, played fair so enough. well. We defended well, and then that Liverpool spirit at Anfield, a special European night. They scored both their goals in the last 5 or 10 minutes, and that Wow, really wow. broke my heart. इंटरेस्टिंग और यहाँ मतलब इंटर की बात भी डेफिनेटली करेंगे, बट लेकिन बिफोर दैट क्विक प्रेडिक्शन ले लेते हैं. अगेन पीपल इन द चैट, एक पोल मैंने डाला है, तो प्लीज पोल लीजिए, बिकॉज दैट इज अबाउट द यूरोपा लीग व्हिच विल कम टू टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट ऑफ द स्ट्रीम. डेफिनेटली टेक द पोल, और अभी प्रेडिक्शन करिए अर्ली ऑन. लेट्स गो विद एन अर्ली प्रेडिक्शन क्विकली. सो नितिका, पुटिंग इन द स्पॉट फर्स्ट अप, इंटर मिलान वर्सेस लिवरपूल एट सैन सीरो. जो भी हिस्ट्री आई थिंक फतेह ऑलरेडी स्पोकन अबाउट, व्हाट इज योर गट फील, व्हाट्स योर स्कोर लाइन आज रात के लिए? सी मेरी ना हर दिन प्रिडिक्शन बदलते जा रही है और जैसे जैसे मैच पास आ रहा है और प्रिडिक्शन बदल रहा है. तो आई स्टार्टेड विद लाइक वेरी इजी विन फॉर लिवरपूल एंड अब जब मैच पास में आ रहा है सो आई एम गोइंग टू गो फॉर अ ड्रॉ. मुझे लग रहा है यार ड्रॉ इज द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी फिक्सचर. सो लेट मी गो फॉर अ 1-1 ड्रॉ हियर.
I actually went from 3-0 victory to Liverpool to 3-1 to 3-2 to now 1-1 draw. Yeah. या वो यार लोग ऑलरेडी लकाका का याद दिलाने शुरू हो गए बट एनीवे एंड दैट्स हाउ इट इज राइट तो अगेन उस्मान भाई वेलकम बैक बट हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल चेक आउट डेली फुटबॉल मैडनेस एज अ ब्रिलियंट चैनल काफी फुटबॉल कवर करते हैं एंड टू एंड और यस ही हैज अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव ऑन दिस पैनल while Nitika or Fateh, maybe they get into a fight. I don't know, so that's why I had to get out Usman bhai to control things. क्योंकि मैं तो नहीं करने वाला, knowing Fateh, knowing Nitika, right? But definitely, तो उस्मान भाई न्यूट्रल ओपिनियन लेते हैं लाइक इन टर्म्स ऑफ लिवरपूल लाइक अगेन जैसे मैंने बोला वन ऑफ दी टीम्स इन यूरोप बट एट द एंड ऑफ द डे हर टीम के पास कुछ ना कुछ मिसिंग है मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट विद फुटबॉल तो इफ एट ऑल आपको लगता है कोई भी है एलिमेंट लिवरपूल का जो दिस इंटर टीम कैन एक्सप्लॉइट इन दिस पर्टिकुलर गेम सबसे पहले तो मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि सीरिया में सॉफ्ट स्पॉट है मेरा इंटर को लेके, तो शायद मैं उतना न्यूट्रल ना हो पाऊँ। लेकिन लेकिन वो मतलब जो भी आप लीग देखते हैं अपार्ट फ्रॉम एफसी बार्सिलोना लीग देखते हैं तो कोई ना कोई ऐसी टीम होती है जिससे रिलेटेड हर किसी का सॉफ्ट कॉर्नर होता है, बस कुछ लोग बता देते हैं कुछ लोग नहीं बताते। तो हैविंग सेड दैट इस मैच के अंदर आई थिंक इंटर मिलान इंजागी हैज डन अ ग्रेट जॉब। बहुत अच्छी उन्होंने साइनिंग्स की। इट वाज लुकिंग कि शायद टॉप 4 के लिए भी कॉन्टेस्ट नहीं कर सकेंगे, लेकिन बहुत अच्छी साइनिंग्स इन्होंने की। जैको वाज अ वेरी गुड साइनिंग, डमफ्रीज की भी बहुत अच्छी साइनिंग थी, तो बहुत भी 3-4 बहुत अच्छी साइनिंग की। तो ऑर्गेनाइज लग रही है, दे आर वर्किंग एज अ यूनिट और दे आर स्कोरिंग गोल्स। आई थिंक मतलब ये क्लोज गेम होने वाला है, वन साइडेड नहीं होने वाला। दैट्स व्हाट आई कैन सी इन दिस मैच। बहुत क्लोज गेम होने वाला है। लेकिन हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, लिवरपूल फॉर मी, मैं शायद जिशान भाई के चैनल पे बैठ के हम रिव्यू कर रहे थे चैंपियंस लीग का, तो मैं वहां पे कह रहा था कि फॉर मी द सेकंड फेवरेट्स, अगर सारे मेन प्लेयर जो हैं वो इंटैक्ट रहते हैं लिवरपूल के, जो देखा है आफ्टर मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल इज द टीम टू बीट इन द चैंपियंस लीग। मतलब ग्रुप स्टेजेस के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है, इवन प्रीमियर लीग में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है, थोड़ा सा ब्लिप आया था, एंड दैट्स अबाउट इट। तो सिटी के बाद अगर कोई टीम है जो कि कन्विंसिंग दिखी है थ्रू आउट द सीजन, दैट इज लिवरपूल। मतलब मैं नेम्स के ऊपर नहीं जाऊंगा, बड़े क्लब्स एंड दैट, लेकिन प्योरली परफॉर्मेंस के ऊपर लिवरपूल फॉर मी आर द सेकंड फेवरेट्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत क्लोज गेम होने वाली है। 2-2, आई एम गोइंग फॉर अ 2-2 ड्रॉ इन दिस मैच, एंड इवेंचुअली लिवरपूल गोइंग टू विन एट एनफील्ड, व्हिच इज ऑलवेज अ फैक्टर। ओके दैट्स इंटरेस्टिंग है सॉफ्ट कॉर्नर फॉर इंटर लेकिन लिवरपूल जीतेगी लाइक इंटरेस्टिंग वो है उस्मान भाई डेफिनेटली वेयरिंग न्यूट्रल हैट आई लव हिम फॉर दैट लेकिन हाँ एज एन अगेन लॉट ऑफ पीपल जॉइनिंग इन आप लाइक करिए स्ट्रीम चेक आउट द डिस्क्रिप्शन फॉर डेली फुटबॉल मैडनेस फॉर इंडी कॉप एंड गिव अ फॉलो टू फतेह एज वेल और ऑफ कोर्स आप अगर ऑलमाइटी ब्लूज एफसी को नहीं किए सब्सक्राइब प्लीज करिए डेफिनेटली वी आर ऑन द रोड टू 1.4K लेकिन गोइंग विद दैट Fateh, I have to come to Inter and a little bit of history as well. And I know you love your history as well, brother. So, in terms of Inter in the Champions League, first of all, 2010 में आपने जीता Champions League और फिर 2012 में I think was the next time you went into knockout stages and were knocked out in round of 16. बस Round 10 of साल हो 16 गए. by Marseille, Correct, correct. coached by Claudio Ranieri at that stage. Interesting. But yeah, after that, 10 years okay, and this is the first time. So, firstly, congratulations, no pun intended. But yeah, congratulations to having reached the round of 16. लेकिन इन इतने सालों में आई नो 2-3 बार हुआ था जो लास्ट डे ऑफ ग्रुप स्टेज somehow you missed the bus and that's why you didn't qualify. लेकिन what has been missing like that killer instinct क्यों नहीं है चैंपियंस लीग फुटबॉल में and what is the difference this time चैंपियंस लीग what do you think? I think this time जो difference है is Simone Inzaghi बहुत ज़्यादा attacking है as compared to Conte. With Conte we sometimes we try to neutralize the opponent a bit too much. Opponent को बहुत ज़्यादा अगर आप respect देते हो, whereas Simone Inzaghi has one system of playing and that's very attacking. Like अगर आज आप देखेंगे तो Dumfries and Perisic they'll basically be camping in Liverpool's half when we attack. And it's the same for Liverpool. Their wing backs they'll be camping in our half. So it's I think modern football has evolved in that sense jahan pe attack gets rewarded more than being more defensive, being more pragmatic, being more Italian. So I think Conte was slightly more pragmatic, and I think that is where the difference is that is bar hum knockout rounds mein aa gaye hain after 10 years. And
I just hope कि ये this doesn't overawe us. ऐसा ना हो कि इतने टाइम के बाद आए हैं, players को कोई experience नहीं है. So I think that is the real fear, because Liverpool, the kind of experience that they bring to the table, it's next level. Right, right. And again, a lot of people joining in. Let me give a quick shout out. Of course, City Hub always supporting. Or congratulations for Man City. Proper मतलब वो तो मतलब I don't know what was the proper washout था. मतलब I don't know what will Sporting do. Second leg में आकर भी walkover दे दो better है. But anyway, that's football. You never know. Big up to JVK, Just Paila in the house, and of course TCSB Giant कल थे. अंकित से रियल के साथ क्या हुआ? कोई नहीं यार, फुटबॉल है. सेकंड लेग है. मैंने रिव्यू किया था और मैंने तो बोला यार ट्रस्ट मी रियल विल कम बैक एंड दैट्स रियली लेफ्ट फील्ड, लेकिन दैट्स फुटबॉल. मतलब दैट इज चैंपियंस लीग फुटबॉल फॉर यू एज एन हैव होप रियल फैंस. आई एम टेलिंग यू. Jota will score, interesting. DJ Ayush, and then Dishant and Haaland are basically two Inter fans from what it looks like. So Fateh, you definitely have company in the chat. A lot of people here, but coming to Liverpool, now Nitika, I don't know if there are any injuries. Injuries है कुछ team में? नहीं? नहीं, instead Origi is also there now, the Oh Champions wow. League guy that we have, जब कुछ नहीं चल रहा, कल so की we'll नो. put Origi there. So yeah, Origi भी है, Minamino भी है. So I think things are like looking really good, and that is what is scaring me now, क्योंकि जब भी believe नहीं होता था कर पाएंगे उस टाइम पे हो जाता था, और अब ऐसा है कि अब सब कुछ है, अब कर पाएंगे कि नहीं, that we are yet to see, but clearly अभी टीम तो पूरा है हमारे पास. Right, right. तो मतलब would you make any change? I know you personally go for Jota usually, if I'm not wrong, नहीं? Yeah, I do. Yeah, actually, this is the team that I was thinking. I was confused with Kita थोड़ा कि मैं Kita को रखूं with Thiago and Fabinho, क्योंकि मुझे लगता है कि but then okay, this is more stable team. I feel I would go for this one because अगर मैं Kita को रखती हूँ, I think I would like to have that experience of Henderson there, that conversations that Henderson keeps alive, and that leadership and that experience. I want that in the team today because it's not going to be an easy game, and we need somebody as experienced like Henderson here. Right. तो मतलब साला is obvious क्योंकि यार साला coming back after a loss in the AFCON final बहुत ही motivated रहेंगे, and Mane of course being on a high, just winning that Hmm. AFCON, a different way of high, right? So these are two obvious players जहाँ पर it's a big danger for Inter, लेकिन just as a Liverpool fan, who do you think will make the difference in this particular game tonight? Mm, I don't know. Why do I think that it's going to be our defenders today as well, that are going to make a big difference here? Because you see, Inter Milan has been scoring a lot of goals, and we know, like Fateh mentioned, that it's not that same Italian mentality anymore that they're going to, sit back and defend and, concentrate on that, but they're going to go all out and attack. And that is what we have been seeing in Inter's game now. So if that is going to happen, and we know how Liverpool play that high line and then that those through balls, even though that offside trap is beautiful, we do that so well. But if there is anybody who can exploit it, I think it's going to be Inter. They are going to play their pacey strikers there, and if they get that right, then it'll be dependent on Ellison Becker if he can save that one when they're one on one with the keeper, because we know that the runs that Virgil van Dijk and Matip are making these days are a bit lagging. So maybe that can exploit us. So that is why I feel that today Virgil van Dijk and Matip have to be their best today if they are going to be the centre back pairing that we are choosing. Because if we do that, the game is ours. Otherwise, I think I have no worry about scoring goals these days because we have been doing that and we have a lot of options to do that. So yeah. Absolutely. Again, a quick shout out यहाँ पर David Talks Football, very good upcoming channel, and so is Chelsea Perspective. Obviously, Chelsea bias तो रहेगा, and he's one of my favorite Chelsea, as in channels out there. And of course, as in great points there from Nitika, or I kind of agree with that. But again, Liverpool have so many options, इतने सारे weapons है ना, कहीं से आप attack कर लो पता नहीं लगेगा. That But is do what you injuries. realize? But do you realize what we have done? हम पूरा time ये रोते आ रहे थे कि we do not sign players and what is FSG doing, and what did we do? We just signed one player, and अभी ऐसा लगने लगा कितना depth है हमारे पास just with one player. So Luis Diaz. what just changed? Just imagine एक ही बंदा लिया है, but the good thing is everybody whoever was injured is back, so that is why वो depth दिखने लग गया है. So I'm quite happy Correct. with that. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. उस्मान भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा. आई नो लाइक हम इंटर की बात कर लिए, लिवरपूल की बात कर लिए, लेकिन एंड आई नो लाइक फतेह मेंशनड अबाउट इंजागी आल्सो गोइंग अटैकिंग, लेकिन
technically वो 3-5-2 ही खेल रहा है Inzaghi, right? As in, I know Dzeko has come in, you know, Dumfries has come in, लेकिन मतलब tactically क्या change किया है? Is it like the mindset of players? What is it like compared to Conte जो Inzaghi ने किया है आपके हिसाब से उस्मान भाई? मतलब आई थिंक ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही है इंजाकी की टीम, लेकिन मतलब मैंने जितना कॉन्टे को देखा है होती है, बट कॉन्टे की टीम्स भी अटैकिंग होती हैं, ऐसा नहीं है कि कॉन्टे की टीम अटैकिंग नहीं होती, दे आर वेरी डायरेक्ट, ठीक है। एक सिमिलर एस्पेक्ट दिखता है, बट दे ट्राई टू बी मोर ऑन द बॉल अंडर इंजाकी, दैट्स द डिफरेंस, ठीक है। डायरेक्ट ये भी हैं, लेकिन कॉन्टे की टीम ज्यादा डायरेक्ट है, दे ट्राई टू बी ऑन द बॉल। एक चीज मैं मेंशन करना चाहता था कि शायद इफ आई एम रॉन्ग, आप करेक्ट करें, बरेला इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस गेम। अगर बरेला both the games if I'm not wrong, right? Yeah. तो दैट्स अ ह्यूज मिस फॉर इंटर मिलान, क्योंकि वहां पे शायद विडाल आएगा, ठीक है, अतुरो विडाल आएगा। आई थिंक राइट साइड इज ओके, मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि पेस ही पेस है, इनके पास पेस नहीं है, अच्छे टेक्निकल, पेरिसिच के पास पेस नहीं है, इज अ गुड टेक्निकल प्लेयर। अप फ्रंट मार्टिनेज के पास पेस है, तो एक पार्टनरशिप अच्छी वर्क करती है बिकॉज ही कैन प्ले ऑफ जेको, बट राइट साइड के ऊपर पेस है, फिर मिडफील्ड के अंदर उतनी ज्यादा पेस नहीं है। तो मुझे तो ऐसा फील होता है कि इफ लिवरपूल इज ऑन सॉन्ग, ठीक है, अगर उनका नॉर्मली दे आर ऑन सॉन्ग, जो ये टीम खेल रही है 4-5 साल से, मोर और लेस, मेरे ख्याल में मोर और लेस क्या है, यही टीम है जो खेल रही है अपार्ट फ्रॉम 1 और 2 प्लेयर जो कि 4-5 साल से इकट्ठे चैंपियंस लीग के अंदर खेल रहे हैं, ठीक है, उनको पता है इन्स एंड आउट का। तो आई थिंक दे आर ऑन सॉन्ग। मुझे मतलब मैंने 2-2 कह दिया है, दैट्स अ मैक्सिमम दैट आई कैन गिव, हो कुछ भी सकता है गेम के अंदर, बट दिस इज द मैक्सिमम आई कैन गिव टू इंटर मिलान, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा प्रेसिंग करने वाली है यहाँ पर लिवरपूल, और इतना इजीली खेलने देगी नहीं। नॉर्मली मतलब 3-4 प्लेयर इनके चढ़ते हैं एक प्लेयर के ऊपर, एंड विद बरेला आउट आई थिंक इंटर के लिए प्रॉब्लम्स होंगी इस मैच के अंदर। Exactly, and Fateh has a great point by Usman Bhai. And again, like people in the chat, I think they were asking about, you know, as in Barella and Gozens, because Gozens, as much as बहुत ही अच्छा signing है Fateh, but he's injured. At the same time, if I'm not wrong, Kolarov, for some strange reason, has been removed from the Champions League squad. So I think Kolarov is likely to retire. For him, Acha. he's very down in the pecking order with age catching up. Even last year, he was very slow. But Barella is out. We know that. Bastoni had picked up a very serious injury or something that looked like very serious. We are rushing him back. So that's another problem for us, because Di Marco played against Napoli away. So, I mean, losing and bringing Bastoni back in a game like this, I mean, if he gets injured, our season could be derailed because we don't really have the bench strength. We don't even have Vecino, the midfielder. So we have just one midfielder on the bench. That's Gagliardini. That's a very defensive option. But what is different, I think, from Conte and Inzaghi is when you'll see Perisic and Dumfries, they are basically at times when we are attacking, we are almost playing a 3-3-4, where, Correct. Perisic and Dumfries are right next to Lautaro and Dzeko. But the problem for us is that we don't really have a lot of pace in this team. Last year, Lukaku and Hakimi had a lot of pace. When we played on the counter with Conte, we had a lot of pace. If you look at Dzeko, he doesn't have pace. If you look at Lautaro Martinez, he's just 24 years old. He also doesn't possess a lot of pace. So the only pacey forward we had is Joaquin Correa, who's again injured. And then, you look at Gusens. Gusens has pace. He's out injured. So I don't think we have the pace. But what we do have, if Liverpool play the high line, is you have to watch for Dumfries, because even against Milan, it was Dumfries versus Theo. Dumfries is so far up forward that I think that is where, if we have to hurt Liverpool, it will be Dumfries on the wing or it will be Perisic on the wing. It will not be, the Hakans and the Lautaros and the Dzekos. Great. And people watching जो भी देख रहा है, like Fateh knows his stuff as well. Inter, ultra, like I say, in the house. And he was actually on TV last week, I think on the kickoff, Fateh, if I'm not wrong. Or I know you've been invited when you were, kind of losing. But वही है ना, Inter, मतलब the run they've had, and then sudden से जब हुआ है, now maybe they'll probably be charged up and knowing कि वो हार भी सकते हैं. I know it's Liverpool and कोई भी टीम हार सकती है. But yeah, as in Fateh, would you agree with this lineup? Like this is what you're expected to play with, right? This is exactly what we are going to be playing. I think we have a good defensive line. Like, I know De Vrij has been really criticized. You were a Dutch fan. De Vrij has been really criticized. It is said that he lost the battle to Giroud, and that's why we lost to Milan. Similarly, he gave the penalty away to Napoli. So, his headspace right now going against Diego Jota, it's not going to be easy for him.
But yeah, this is the team that we can. This is the best we can do. Vidal going against Thiago. Vidal played for Barca on that infamous night, as Usman Bhai will know, at Anfield. So he has a lot to prove. He's not been starting. He doesn't have that sort of pace. So I mean, I think if it's somebody who I'm looking at today, it's Dumfries. Interesting. But हाँ मतलब talking about Inter, like coming back to Liverpool, Nitika, like हमने teams देख ली है, but for you, like in Inter, if I'm not wrong, Edin Dzeko has a decent record against Liverpool in his Roma days. I remember Yeah, to some yeah. extent, Man City days. So मतलब we cannot forget that as well. So मतलब what is the main tactic? Like you think Klopp needs to change anything if at all? क्योंकि यार देखो, you are playing 3-5-2, which is not a very common formation in the Premier League. 3-4-3 Hmm. maybe, but 3-5-2 is Hmm. very kind of rare in the Premier League. So Hmm. do you think is there any way that to Klopp will maybe feature someone else maybe in the defense? I know Matip isn't brilliant, or maybe Hmm. just tactically कुछ अलग करेंगे Klopp? I don't think that is going to happen. I think Klopp is going to play very, very safe today because, first of all, this is an away fixture and we know that we need to get that win. So, we are not going to come here for a draw or maybe something like that. So, we want that win and we are going to play with that intensity and it's going to be pretty much the same way we play. We are going to play that way only. But the thing is that I was thinking that can Klopp like bring new people, new faces in the team today just to try something out? Maybe Harvey Elliott, bringing a Harvey Exactly, Elliott in. just to surprise So them, right? yeah, just to give that surprise thing. But then that is very unlikely to happen. I have a feeling that we are going to go with that same Henderson, Fabinho, and Thiago sort of a lineup. And if we are talking about the front three, I think that we're going to rely on the players that have played in Klopp's system, and we are going to enact that more than anything right now. Because the thing is, I remember this was Liverpool versus. Liverpool versus Real Madrid's match, and in that match he got Keita in. Matlab, he was not Correct. even starting Keita in any match, and we lost that match very badly. And then he had to substitute Keita in the first half, and that is what had to happen, because when we expect from Klopp that he should make changes, then he does not. But then at that point of time, it was not needed to bring Keita in at that point of time. So I think that he's going to go with that reliable team. I was thinking that maybe if we can bring माटिप और वर्जिल वैन डाइक होने वाले हैं कि क्या कोनाटे को लाना चाहिए because he's quite pacey, and maybe if we are playing that high line, so there's a possibility that we can, like he was talking about Dumfries and also maybe Konate can be that useful hand, and ऊपर से साथ में Yeah. Trent है, तो people say that since Trent अच्छे से defend नहीं कर पाता है, but I don't think that that is going to be the case anymore, and it's going to be quite good. I think Trent is going to have a very good match. तो उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कुछ चेंज होगा, बट जो टीम का एक सेटअप रहेगा वो ये रहेगा कि पूरा लाइक जैसे शुरू करेगा ना लिवरपूल मैच पूरे इंटेंसिटी से शुरू करेगा, वैसा नहीं होगा जैसे कि ठीक है आराम से देखते हैं, नहीं, लाइक दे आर गोइंग टू हिट देम हार्ड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट ऑफ द गेम. सो आई थिंक इट्स गोइंग टू स्टार्ट लाइक दैट. Yeah, good comment about Konate क्योंकि हाँ मतलब after all Inter do not have a Kante, just proper pun वहाँ, लेकिन just a reminder and we'll come back to that. We are facing I think each other in the Carabao Cup final very soon, Yeah. Nitika, so yeah, I think beware. But हाँ, I think great points there. I definitely agree there. So Usman bhai, as in एक interesting अभी करते हैं कुछ, and again people in the chat as well. I hope everyone has taken the poll. And this is a combined 11, right? So combined 11 में I know as in लड़ाई होने वाली proper between Fateh and Nitika. तो उस्मान भाई it's kind of you are having the vote ना, वो लोग तो obviously किसके लिए vote करेंगे पता है kind of. And again people in the chat आप vote करिए. तो उस्मान भाई I'll ask you what should be the formation? 4-3-3 क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लिवरपूल डोमिनेट करने वाली है, तो आई वुड गो विद 4-3-3 और आई वुड गो फॉर क्लॉप एज अ मैनेजर आल्सो. तो मैनेजर तो फिर वही खिलाएगा ना 4-3-3. Yeah, I think Fateh will take that. What do you think, Fateh? It's okay. I'll take it as long as Brozovic walks into that midfield and Skriniar walks into that We'll come to defense. that. I'll We'll take come it. to that. Fateh It has is already already having his started. agenda. Nice. But yeah, isn't that's the thing, right? I mean, we all love to kind of back our own teams, and we know what are the strengths and weaknesses proper. Matlab, that's what Ultras are all about, right? So
शुरू कहाँ से करते हैं? शुरू ऑब्वियसली गोलकीपर से करते हैं. अभी क्विक आई विल गो अराउंड द टेबल एंड ऑफ कोर्स पीपल इन दिस चैट आप भी बोलिए. इट्स अ कंबाइंड 11 और हम इस सीजन के फॉर्म के मुताबिक चल रहे हैं. एंड इफ यू आर पिकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर मैच फॉर एग्जांपल और फॉर चैंपियंस लीग नॉकआउट्स इन पर्टिकुलर वुड बी द बेटर option, or we'll include everyone irrespective of whether they're injured. I think a question tha about Sanchez being injured or not. I think he's fit, right? Fateh? He's fit. He's going to come on. I think second half we'll see Alexis. Right. So Alexis is included, Barella is included, everyone is included, and just a fictional kind of team. So we're just going for a imaginary, kind of combined 11. तो firstly उस्मान भाई आपसे शुरू करते हैं. Goalkeeper Handanovic और of course we have Alisson. Alisson. For me, Alisson. Okay, and Nitika, without a shadow of a doubt, I'm assuming Alisson. We can consider somebody else as well, but come on, it has to be Alisson Becker here. Yeah. You Fateh? remember when he Yes. saved us from that Napoli wala goal last minute pe, to he yeah. can produce something like that in Champions League, so it has to be Alisson Becker. No, it has to be Alisson because Handanovic has been making a lot of errors. He's very old now. His best is behind him. So I mean, it's very scary if Liverpool start taking shots at him. I don't know what's going to start happening. But ठीक है, तो I'll just mention one thing here. Any goalkeeper that is playing against Liverpool turns out to be a world-class goalkeeper sometimes when they're playing against us. And तब कोई chance नहीं देता. तब हर जगह से like they're making saves, so it can happen. Okay, and we'll come to this again. Michael Talks Football, again, a brilliant channel, people. Liverpool fan in the house. Do check it out. And City Hub, we'll come to your comment as well. So, yeah, Alisson obviously is in goal. Left back, again, let's also consider Gozens. Would you, any of you, let me put it that way, would you consider Gozens, or I think Robertson walks in as well? Anyone having a debate? Robertson for me. No, I'd go with Perisic because he's been our best player. We didn't expect this from him, and he's 33, 34. But that engine, I mean, you'll see him today. The way he'll be running through that flank, I just can't wait for Gosens to come in because that'll give us so much strength on the left. But it's too late for the Liverpool game. No Gosens, but I'd go with Perisic. Yeah, लेकिन 4-3-3 में भी go with Perisic, or you want to change the formation? Like you have a debate for that, you can be up for it. I don't know. No, I play the 4-3-3, but there are only three players that I see from Inter getting into this combined 11, and one of them is Perisic. Okay. So Perisic के लिए एक वोट गया. Anyone in the chat believes that the left back should be Perisic? Because honestly, I've got Robertson from Usman Bhai. I'm obviously assuming Nitika, Robertson has to be the one, and I personally also feel that. But अगर लोग बोलते हैं कि if Gozens or Perisic are better options, more people in the chat, I might just go for it. So Gozens will be available for second leg, okay. But is he your best left back when it comes to all left backs? Like abhi ke liye, I am putting it Robertson because just going by the votes. Otherwise, yeah, we'll come back to this. Anyone in the chat believes कि if anyone else is better, let's see. This one is good. Perisic at left wing makes sense to me because let's be real, he has been better than Mane. Well, yeah, so left wing, we'll come to that. So you still have a hope, Fateh, to get in Perisic in this particular team. Now, in the centre back positions, now this is going to be very interesting, and I'll try and show the options for you as well. But maybe while I show that, Nitika, maybe your case for centre back. See, whenever we talk about centre back, I like to talk about centre back pairing because there has to be an understanding between both of them. It just can't be that one is going somewhere and the other one is going somewhere else. So I think the understanding is necessary for any centre back pairing that there is. So, but if I'm talking about the centre back pairing, obviously it depends on that. Like you're going for the same club members because they played with each other a lot. But then, to be very honest, I have not really seen the centre backs play that well. So anything like that, even though they have a very good defensive record this time. But I'll go for Virgil van Dijk. But if you want to pick somebody over Matip, I would understand. But I wouldn't understand you picking anybody over Virgil van Dijk. So Virgil van Dijk is going to be there. But if you have to make a case over Matip here, then I can say that Matip and Virgil van Dijk pairing has been brilliant for us. Brilliant. तो अगर हम Matip को sorry. Just one. I just want to ask you, in your opinion, किसका season better रहा है? Matip का रहा है या Virgil van Dijk का? ये वाला season. Virgil van Dijk is
वर्जिल वैन डाइक का सीजन हैज बीन अमेजिंग, बट वही चीज है कि वो दिखता नहीं है कि व्हाट ही हैज बीन डूइंग। बट जब तुम, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि जो एकदम एक्सेप्ट बहुत अच्छे प्लेयर्स हो जाते हैं ना, वो कुछ भी करेंगे, हमको लगता है कि या दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम टू डू दैट, राइट? बट व्हेन यू सी द स्टैट्स, not from the like a fan perspective, but just to analyze things, how Virgil van Dijk has been performing, and that will give you the true stats. But the thing is, when we are talking about the highline, Virgil van Dijk gets criticized the most in that. But the problem can be with the highline, but it's not with the player. So I think that Virgil van Dijk is being criticized just because of that. But he has had a very good season, and come on, he came from a very big injury and getting into it. So I think that Virgil van Dijk is going to be there. Matip has been very very good for us, but if I can make a case here for any other Inter player, then it can be over Matip. So let's put Skriniar there because Oh, yeah, I how would do you also go for not have Skriniar? Virgil van Dijk and Skriniar. Virgil van Yeah, Dijk and Skriniar would be my two Yeah, center yeah, backs. yeah, yeah. yeah, That will work. Yeah, that Interesting. will work. that'll work. I thought, like, I don't know, I had a strange feeling that Fateh might be, tempted to go for Bastoni because he brings such a different element. Yeah. Like, I He guess, does, but I don't know about him in 4-3-3. If you remember the Euros, he played one game and he was okay-ish. But in the 3-5-2, the way he attacks, but again, he's carrying an injury, so I don't know why we're playing him today. as in, is he like injured, or like it's like just a knock? No, no, no. It was a serious looking injury, and we are rushing him back. There was a lot of Oh, okay. swelling. His left foot was swollen, I think. So ankle, and Interesting. we're rushing him back. Okay, so Hmm. guys, we have like four positions already done in the combined 11 of Inter versus Liverpool. Or abhi right back पर आते हैं, and I'm pretty sure like Trent Alexander-Arnold will be told as the best right back in the world, one of them for sure, and I agree with that. लेकिन यार Fateh knows this very well as well. Like Denzel Dumfries, I cannot leave him out. I don't know. Honestly speaking, लेकिन हाँ, I'm pretty sure you'll go for Trent. What do you think, people in the panel? Maybe Usman bhai. I would go for Trent. I know कि defensively उतना ज़्यादा वो मतलब convincing नहीं है, but that is not also the case with mostly the case with Dumfries also. लेकिन why I would go for Trent is that I know जो मैं midfielder रखना चाहता हूँ that can cover, जो कि normally लिवरपूल पे भी होता है, तो वो cover provide करता है उसको। और ट्रेंट की अच्छी चीज़ ये है कि he can take free kicks, उस अटैकिंग वाइज ही कैन स्कोर, उसकी फिनिशिंग अच्छी है, फ्री किक्स, कॉर्नर किक्स, ही कैन डू दोज आल्सो। तो यू नीड अ दैट टाइप ऑफ प्लेयर इन योर टीम जहां पे आपको एक ऑप्शन हमेशा से रहे सेट पीसेस के ऊपर। तो दैट्स व्हाई आई विल गो फॉर ट्रेंट एज माय राइट बैक। Other than just Okay. assisting to almost everyone, I think he can do all that with Barca he has said. So yeah, come on, it has to be Trent. Fateh, any arguments there, or anyone in the chat? No, I do agree. Dumfries made a very slow start at Inter, but this year he's the kind of physical the physical beast that he's become. And like we said, that if Klopp is playing the high line, then if there has to be a star for Inter, it has to be Dumfries tonight. But at the same time, game's not over yet, so I think we'll go with Trent Alexander. Yeah, so this is what the team looks like right now. और midfield पर आ जाते हैं जल्दी से. So midfield में holding midfielder कौन होगा? Fabinho? Anyone against Fabinho in the panel or in the chat? I would personally go for Fabinho because he Okay. covers a lot of ground, a Hmm. lot of ground. I know यहाँ पे Brozovic is an option, लेकिन I think Fabinho has everything. मतलब he can be good on the ball, physicality है, as I said कि वो cover कर लेता है ground. I think Fabinho for me will always be there. Yeah, यहाँ पर Dumfries के लिए यार thanks Dishant. Yeah, definitely I'm with you, but yeah, I'm the minority with you probably. लेकिन coming to Fateh, Fabinho, or you have case for Vidal maybe, I don't know, left field. No, I don't have a case for Vidal, but if Fabinho is playing, then on the right side we need Brozovic because I'm not going to let anybody not overlook Brozovic. I think without him, Inter is nothing. I think he's been so important, and if he's on song tonight, then we'd really have a very good chance. I mean, his passes to Perisic and Dumfries, that's what you need to look at. So as long as you have Brozovic there, I'm okay with it.
Yeah, मतलब come on, Liverpool one season wonder team really like come on. थोड़ा सा harsh है in my opinion, but anyway, it's all about opinions. ब्रोजोविच को मैंने डाल दिया already. नितिका, क्या लगता है कौन who would you put? Brozovic I've just put for the timing in case you have an argument. I think I agree. I agree with this one. Okay, fair enough. And Yeah. who else I would you put? Huh? I think मतलब दो वोट तो already मिल चुके हैं, so it is Brozovic, but I would have personally put Nico Barella in that position. Yeah, that's a great shout actually. मतलब if I you mean, ask I'm not me, just making a team for the personally. I'm not making a team just for the sake of it. जो एक एक position के ऊपर best players है, I would personally pick that. Normally, when I'm making a team, But so aren't we I like would considering the players who are available, or can we नहीं pick नहीं like anyone? नहीं, we no can no. pick I mean, anyone Okay. from the who are Okay. season. there in the So, squad. Klopp really I'm mentioned Barella specifically in his press Yeah. conference. He said, Yeah. 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 he's awesome. But at the same time, this season, if there have been two letdowns for us Inter fans, Hmm. it's been Lautaro and Barella. I mean, Barella has been good, but Hmm. it's been in it's been in fits and starts. And the red card that he took up against Real Madrid. I mean, they're saying that Barella is going to be the next captain, but come on. I mean, he gave away a penalty last season against Real Madrid at home. This season he got sent off. So I mean, it's those things that sort of make me hold back on really sort of upping Nico Barella. I mean, yes, the talent is there, but Hmm. it's just not been the same the way he was under Conte. Now Inter fan himself is saying, as in these things about Barella, to yaar Hmm. Fateh. I thought you'd probably back me. I was going to have Barella and Brozovic. I know it's left Wow. field, लेकिन No, I mean I'm all for it. I'm all for it. I'm all for that midfield because, like I said, I mean if Klopp is going out specifically mentioning somebody, then kuch to baat hai. And Barella Hmm. mein definitely baat hai. I think he's just 23, 24. And yeah, absolutely, Brozovic can play on the left side. And Hmm. I mean Brozovic has been so good. He's so underrated. Like I think a lot of the EPL fans will actually wake up to Brozovic in Hmm. this time. fair enough. नितिका क्या लगता है मतलब who's your bet? You're going for Thiago or let me actually put up the options for you. लेकिन हाँ, certainly a lot of options Liverpool team भी, so I wouldn't kind of Wow. count them out. So we have, I think, yeah, we have what Thiago, James Milner. James Milner, one person in the comment mentioned that he deserves in such a team. Lekin, see, my argument is that right, as in if you're just picking a team now and you have Hmm. Fabinho to protect and Brozovic with all his distribution that Fateh mentioned about, so Hmm. I think Barella is great Yeah, because he's an option going absolutely. forward. He kind of links up with the attack. उस टाइप का प्लेयर है एंड थियागो एज मच एज हिज पोटेंशियल में has been great लेकिन हम फॉर्म के हिसाब से जा रहे हैं in the season right and that's the only reason why I thought like Barella kind of gets over Thiago if unless you go for a Henderson and don't go for a Brozovic. I don't know. I'm going to go for Thiago here. See, I have. If you're talking about a UCL team here, जो हम strongest choose कर रहे हैं out of Inter Milan and Liverpool, and एक UCL team के हिसाब से you don't pick one of the most experienced players that there is, that is Thiago Alcantara, and what he can do with the ball, being in this team, and how important he is, and then if Fabinho and Thiago are there, I think Fabinho is even better. And if you're talking about the form of Thiago, एक तो इंजरी उसके बाद जब भी वो खेला है ही हैज बीन सो गुड he has been really really good, but if you're going with the consistency, then obviously you can. I have nothing against Henderson, he's my captain, but if I'm talking about the form here, I would love it that Thiago is there because he has been so good always. I think Interesting, this is the interesting. right time for him to show that to people if they think that he's not the one. Yes, again, thanks everyone for joining and do smash that like and check out the description for everyone's, socials as well as the channels. And do subscribe to us as well. लेकिन हाँ, Usman bhai, we are in a fix. You have to help us now. Midfield में, like I said, I decider vote will be with the chat and Usman bhai. I was going to go for. I mean, I know it's a crime to leave Brozovic out. I would have gone for Fabinho, Barella, and Thiago. I would have gone for these three players. But मतलब मुझे ऐसा लगता है जिस तरह लिवरपूल या कोई what I want to do in 4-3-3 formation is I want to have a control and I want to play direct football. So that's why I would wanted these three players. I would go for Thiago. I think Okay. Brozovic.
slash Barella, but I would go for Thiago because especially with Brozovic and Fabinho, I would need that creativity, that pinpoint passing. So that's why I would go for Thiago. कोई नहीं. अरे मेरा भी चैट पढ़ लिया. डेफिनेटली यार, कम ऑन, लाइक यू नो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस विल कम टू दैट, डेफिनेटली विल कम टू दैट. लेकिन हाँ, अभी हम कंबाइंड 11 कर रहे हैं, तो आपने वोट्स भी डालिए. एंड मतलब आई डोंट नो, मेरा गट फील बोल रहा था कि यू नो उस्मान भाई विल गो फॉर थियागो, और मैंने डाल दिया है ऑलरेडी थियागो को, जस्ट बिहाइंड द सीन्स. तो दिस इज व्हाट वी हैव. तो ब्रोजोविच इज व्हाट यू मेंट, उस्मान भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Yes, Fabinho, Brozovic, and Thiago. ठीक है. अप फ्रंट मतलब आई थिंक साला, माने, कम ऑन फतेह, these two walk in the side, or is it at least Salah? Salah को No, drop. I think. Look, for me, it would be a Barella, Brozovic in midfield, and then the attack would be all Liverpool, because I know that everybody talks about Lautaro and that, but look, Lautaro Martinez has not scored, I think, in 9 games. He's got 1 goal in 9 games, and you know, he can press. He's a very good Klopp type player. I mean, he's very good in the defensive aspect, the pressing and all that. But the goals have just not been coming. He's been missing sitters, and so I think for me, you definitely take the Liverpool front three. I mean, nobody from our team is getting in there. Oh, Fateh is already waving the white flag. I can actually see that I behind you, can- Fateh. I guess I can help. I'm going to fine. book. I'm going to put Checo in there. Exactly. मतलब I was waiting for it. Come on, Fateh, what's wrong with you? I mean, Definitely, maybe Mane, just Salah, and Jacko. That is going to be amazing. नहीं, I But know. don't they say Reverse that psychology Jota है, is Fateh. the key player these days? Jota has been scoring goals for them. So why don't we put Jota here? मतलब Nitika, come on, get in. What do you think? Let's see. I'll tell you something. माने का थोड़ा फॉर्म में डिप है, इवन दो वो टॉप 10 स्कोरर्स में है लिवरपूल के. एंड द थिंग इज वही चीज है, साला एंड जोटा हैव बीन परफॉर्मिंग सो वेल. माने का परफॉर्मेंस दिखता नहीं है, लेकिन जब माने टीम में नहीं होता ना, तब सबको माने की याद आती है कि यार लेफ्ट विंग पे माने जिस तरीके से वो बॉल्स रिसीव करता है, एंड दैट अंडरस्टैंडिंग एंड डिफेंसिव ड्यूटी एज वेल ऑफ सादियो माने. बट दैट इज नॉट द पॉइंट हियर इफ वी आर गोइंग फॉर दिस टीम. हमको वो चीज चाहिए नहीं है प्लेयर से. तो अगर हम पूरे विंगर्स की बात कर रहे हैं एंड वी आर पुटिंग जोटा ऑन द लेफ्ट, if Fateh Bhai wants and he wants to put somebody from their team, he can. But I think that our attack has been amazing. Our attack has been really, really good. But अगर वो चाहते हैं किसी और को रखना, I won't like complain here. मैं चाहता Yeah, Usman भाई. चेको को रखना. मैं चेको को रखना चाहता हूँ. उसकी रीजन ये है कि I have played Trent on that right hand side. तो ट्रेंड के जो क्रॉसेस हैं, देयर इज ऑलवेज एन आउटलेट. सो नॉर्मली वहां से आप डेंजरस रहेगा जेको. एंड जेको का सिर्फ ये नहीं है कि वो हेडर एबिलिटी है लाइक लूक डी योंग, उसका लिंकअप प्ले भी बहुत अच्छा है. ही कैन होल्ड द बॉल. साला एंड पेरिसिच विद हेल पेरिसिच केम फ्रॉम साला एंड मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो इट्स अपॉन यू गाइस. I was saying Salah and Mane can play off Checo also, and he will always be an option in the opposition half also, from the crosses of Robertson and especially Trent on that right hand side. Interesting. I think it's a crime to leave Jota from this team. You know, it's a crime. So I think let's go with this. Like, what do you think? Like, this is fair. I think this is... you can't like see कुछ भी बोल दो. वो मैं वही बोलूँ, कुछ भी बोलो, you can't keep that informed player right now out. You know, अगर वो informed I mean, है, I think the way Liverpool attack, I think those three attackers should get in. But Thiago Alcantara right now is an ISO for me. Like, how does he get in there? Like, oh I mean, my God. I get it. If help. it's 2017, 2018, I get it. But 2022, I don't know. Anyway, like again, there's a lot of debate already. I was like, you know, hoping that there'll be some debate. Like, I don't think we have come to a conclusion. I think if you think about numbers, then Jota should be there, Jacko should be there, and Salah should be there. So if you talk about numbers this season, logic. And exactly. if you talk about performances, Fabinho should be there, Brozovic should be there, and Barella. I'm not really sure. I mean, Barella can be there, but as you also said that he is talented, लेकिन उतना अच्छा सीजन नहीं रहा उसका बरेला का भी. Thiago whenever he is available, उसकी बहुत अच्छी गेम रही है. So it's like
अगर बरेला का भी अच्छा सीजन रहा होता तो आई वुड डेफिनेटली हैव गॉन विद बरेला ओवर हियर, बट जस्ट फॉर द टीम बैलेंस एंड दैट एक्सपीरियंस आई थिंक फबिन्हो ब्रोजोविच, यू नीड अ प्लेयर लाइक थियागो with, as I said, pinpoint passing और जो कि lines को break कर सके, and that's the only reason कि Thiago is here. And Thank you, Usman look, bhai, I mean, by the if way. you have Salah and Mane providing for Dzeko, somebody mentioned, Dzeko hasn't really had the numbers. But if you have Salah and Mane providing for Dzeko, then, even Dzeko's numbers are going to be very good. I mean, he's even for a I mean, 35-year-old. Yeah. Dzeko has same numbers as Jota. So if you want Oh, Jota in your team, then you can have. I mean, I think no, now I'm let's having a look. I let's think let's that keep Dzeko because Nitika, 14 if you goals, दोनों ने 14 गोल्स स्कोर किए इस सीजन मेरा ख्याल में, तो yeah, Nitika मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? सी मेरे को ये वाला लाइनअप ठीक लग रहा है, जैसा है अगर हम नंबर्स के हिसाब से बात करें, क्योंकि क्या है ना, हर प्लेयर का रोल अपने टीम में डिफरेंट रहता है। जैसे मैंने मेंशन किया, जैसे सादियो माने लेफ्ट विंगर में खेलता है। अभी लुइस डियाज का केस अगर मैं रखती हूँ, ऑब्वियसली लुइस डियाज इज नॉट गोइंग टू बी इन द टीम, बट अगर हम लुइस डियाज के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है कि he has had an incredible debut for Liverpool. I feel one of the best that I have seen recently. तो एकदम से आके जेल होना with the team and playing just the way we want him to, so it has been amazing for the, in that sense. But मैं लुइस डियाज को इसलिए कंसिडर भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्या है ना, there are specific responsibilities that every player has in every team. तो एक मे भी हो सकता है कि, and you will see that माने डिफेंडिंग, माने हैज बीन डिफेंडिंग सो वेल हमेशा, मतलब वो दिखता है वहां, इतना हम साला को नहीं देखेंगे बैक ट्रैक करता हुआ जितना हम माने को देखेंगे, एंड वो अपनी डिफेंसिव ड्यूटीज जिस तरीके से करता है, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अ क्लॉप टीम। तो क्लॉप की टीम में वो रिक्वायरमेंट रहता है। जोटा भी अभी इतना डिफेंसिव ड्यूटी अभी शुरू किया है उसने वो करना, बट हैज नॉट बीन डूइंग इट ऑलवेज। बट मैं वही बोल रही हूँ, सादियो माने अगर नहीं गोल कर रहा है बट ही इज प्रोवाइडिंग समथिंग एल्स, तो इसलिए सादियो माने के शायद नंबर नहीं दिखेंगे, बट नंबर्स के हिसाब से बात करें तो आई थिंक दिस इज गुड इनफ, अगर नंबर्स की बात Good. करते हैं तो। ठीक है, तो we'll go with that. So finally we have come to some conclusion, guys and girls watching, and this is what it is. अरे बाप रे, वो तो बहुत ही मुश्किल था। उस्मान भाई थैंक यू यार, मतलब आप नहीं होते तो पता नहीं क्या करता मैं। But this is what it is, like a brilliant team. Honestly, हाँ, Inter fans will say कि Barella should be there. Like Nitika said कि साडियो माने को कैसे आप छोड़ सकते हो? Lot of debates. Like मैं खुद डच फैन हूँ यार, मतलब डम्फ्रीज का मेजर लाइक भक्त हूँ मैं तो, like honestly मैं बोलूँ तो। But as in, that is what it is, like opinions, as it's a in good soft team. biases. That is football, and we all love for it. Like, a lot of discussion हुआ है Inter Milan Liverpool, and we'll come to other games, Bayern Munich के game, Barca का game, which is tomorrow as well. Lekin I know Nitika, you have to leave if I'm not wrong. Yeah, If you would yeah. have continued, it would have been great. But fantastic having you as always. I hope you had fun, and of course, all the best for the game. As in, I'm a neutral. Lekin again, I kind of favor the underdog. So in a strange way, I I'm a must say neutral, कि इंटर जीत जाए, लेकिन इंटर जीत जाए तो अच्छा लगेगा। यार यार इंटर लेकिन अंडरडॉग कैसे है, इंटर अंडरडॉग कैसे है यार, अरे मैं लिवरपूल की लीग बात see, कर जीत रहा रहे yeah, हूँ। हैं, yeah. टॉप ऑफ द लीग पे है, मतलब दिस इज नॉट फेयर यार। अंडरडॉग है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है चैंपियंस लीग का, Hmm. बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है लिवरपूल के बाद पास हम अभी भी चैंपियंस लीग स्ट्रगल का। कर रहे हैं लीग ट्रॉफी के लिए, एंड इट्स लाइक क्लियर कि हो सकता है दिस टाइम इंटर गोज एंड विन दैट अगेन, सो कम ऑन। You didn't even lose a single game in that knockouts. And you beat AC Milan both the times. We also dominated AC Milan, by the way, but we couldn't beat them. So you already done that, Fair and enough. that's over 2 games. We failed to do that this year. So I But you mean, can't compare your result with an AC Milan no, team. You know why? Because that's a derby. Sometimes even we lose. Like derbies are something very different. यार उसमें अलग ही एक atmosphere रहता है. But since I know थोड़ा experience कम है टीम में, but एकदम underdog वाला mentality लेके नहीं, मत जाओ, अंडरडॉग because वैसे मैं एग्री करता हूँ। आई थिंक इट्स 60-40 मैच 60-40 है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस। इंटर इज अ वेरी गुड टीम और इस सीजन वो बहुत ऑर्गेनाइज दिख रही है, तो आई वुड से कि 60-40 है इस मैच में। आई वुड एग्री। the thing is the narrative seems like we are going to play somebody who struggled to like come to the top four, but no, they are in Europe, see, it's that's what's interesting about us in Europe. Like in Europe, we've always been the underdogs because it's Pazza Inter, crazy Inter. Like look at us, the last 3 years, group stages. We couldn't even negotiate group stages last year. I think. I mean, just think about it. So I think that is why the idea that we are underdogs, and I think that is why No, Inter I fans get also that. I'm messing with you guys because come on, I would like it. अगर बोले कि same है तो that would be good. अगर कल अगर हार जाते तो सोचो ना, फिर वही असल underdogs में है one, and असल so that'll be असल
असल में मुझे कल कोई बता रहा था कि जो यश भाई हैं वो हर जगह कह रहे थे कि नहीं रियल मैड्रिड नहीं जीतेगी, रियल मैड्रिड नहीं जीते। असल में वो चाहते थे वो दिल से कि रियल मैड्रिड जीते, लेकिन वो कह कहीं पे नहीं रहे थे। तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। अब मैं नहीं कहने वाला कि बारसा जीत रही है नेपोली के अगेंस्ट। वही ना, ग्रेट अगेन। कल सुबह उठना भी है, देखना भी है रिजल्ट की क्या हो गया, एंड कुछ अगर अपसेट हो गया देन आई नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सो उसके हिसाब से चलो ड्रॉ 1-1 इट्स ओके। बाकी गाइस हैव अ ग्रेट सेशन अहेड, आई एम सॉरी आई कांट जॉइन, बट ऑल द बेस्ट फतेह, ऑल द बेस्ट, लेट्स होप Same इट्स to अ you, गुड same to you. गेम। लेट्स होप इट्स अ गुड Anyway, गेम। thanks बाकी a थैंक lot. यू। Yeah. People ऑलराइट do बाय, check टेक out केयर। IndieCop and we'll see you soon. ऑलराइट बाय, टेक केयर। Bye. Bye. Okay, so let's continue, people. So Usman bhai, I think we'll come to the next topic, or this is about Bayern Munich. हाँ, just like Man City कल थी, no one is talking about Salzburg as a Bayern Munich. लेकिन I know Usman bhai, you are basically one of those German football as in pundits as well. That's what I would like to say. So Adeyemi is part of Salzburg. एक player जो I think if I'm not wrong has been linked very strongly Dortmund के साथ. और Dortmund, I know you went on record saying just like Inter Milan आपका soft corner है. Dortmund also is one of those teams which you like following ना. तो strangely, he'll be basically एक अपना test करेगा कि यार what can he do against Bayern Munich, right? So that is one thing. और Bayern Munich, but yeah, they are coming off a loss जो इतना होता नहीं है against Bochum. So it's a wrong time Salzburg के लिए to play Bayern Munich. At the same time, I think Bayern Munich, not just that, इस season में already I think Leverkusen के साथ एक बार हारे हैं, एक बार I think it was Gladbach जिसके साथ हारे थे. So there are ways to beat Bayern Munich, Usman bhai. So what do you think will be Salzburg's tactic? What is the best way that they can try and beat Bayern Munich? So I mean Salzburg has been very impressive. मतलब उनके पास अच्छे यंग प्लेयर्स हैं। हम अपने डीमे की बात की और 3-4 बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं और दे ट्राई टू अटैक, ठीक है। तो अच्छा मजा आता है गेम देखने का। एंड आई ऑलवेज वांटेड कि वो नॉकआउट्स के अंदर आए बिकॉज दे डिजर्व इट, जिस तरह उन्होंने खेला नॉकआउट्स के अंदर भी। बायर्न की बात की जाए तो आइदर इट्स लाइक कि वो 4 गोल करेंगे, 5 गोल करेंगे, और या फिर इस तरह का कोई ऑफ गेम आता है जो बॉकम के अगेंस्ट आया। लेकिन अगर बॉकम के अगेंस्ट जो उनकी लाइनअप है ना वो आप देखें तो इट इज लाइक वन प्रॉपर मिडफील्डर जो कि किमिक खेल रहा था, एंड दैट वाज मुल्लर के अलावा इट वाज लाइक साने, कनाबरी, फिर किंग्सली कोमन वाज आल्सो प्लेइंग इन लेवेंडोव्स्की। तो ऐसा लगा कि मुझे फीफा खेलने की कोशिश की यहाँ पे नागल्समैन ने, और दैट गॉट हॉरिबली रॉन्ग। मतलब ठीक है फार्मर लीग है और बायर्न इजी, बायर्न ने मुझे ऐसा लगता है इजी लिया उस गेम को, और यू नेवर टेक अ फुटबॉल गेम इजी, मुझे ऐसा लगता है। आई नो कि उनके पास इंजरीज थी, काफी प्लेयर्स उनके मिसिंग हैं, जैसे ग्रेट्सका था, अल्फोंसो डेविस था, और भी 2-3 प्लेयर्स मिसिंग थे, बट दे हैड टोलिसो एंड स्पित्जर। अगर आपने इस तरह की गेम्स में स्पित्जर और टोलिसो को नहीं खिलाना तो आई डोंट नो कब खिलाना है। Same goes for Real Madrid on so many other players also. So I think they should be trying those midfielders in those games. And please don't go with the same lineup. You have to either have Tolisso or you have to have Spitzer. शायद गोइट्सका अभी मुझे नहीं पता कि अवेलेबल है कि नहीं, अगर है तो that's always good. लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो Tolisso और आपको खिलाना पड़ेगा, और मुलर शुड बी प्लेइंग बिहाइंड लेवेंडोव्स्की विद 2 वाइड प्लेयर्स, सो दैट आई थिंक स्टिल इज इनफ टू बीट साल्जबर्ग ओवर द 2 लेग्स। मुझे ऐसा लग रहा है इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होने नहीं वाली, इतनी ज्यादा कन्विंसिंग बायर्न की डिफेंस नहीं है। उपमेकानो has not been in great form. Soul already confirmed towards Dortmund, तो क्या frame of mind है, we Right. never know. Pavard Obviously. on that right back position is never convincing. Neuer is out. So Neuer is also out. Oh wow. Neuer पिछले मैच में नहीं खेल रहा था, तो आई थिंक कि वो भी नहीं खेलेगा। तो प्रॉब्लम्स है बट नॉट इनफ। अगर यहाँ पे कोई बड़ी टीम के साथ मैच हो रहा होता, नो डिसरिस्पेक्ट टू सॉल्जबर्ग, एज आई सेड दे डिजर्व टू बी हियर, बट आई थिंक ओवर द 2 legs इट्स लाइक लेवेंडोव्स्की ने ही 3-4 गोल कर देने, और दैट वुड हैव बीन एनफ ओवर द 2 legs. Great. मतलब that is Usman bhai for you. German football, summed up so beautifully. And yeah, मतलब honestly ये information online भी नहीं मिलती जो उस्मान भाई के साथ है, because I actually googled up before looking at it. क्योंकि हाँ, at the end of the day इतना सारा football है कि I try and follow all the leagues as much as possible. लेकिन हाँ, we kind of are human beings and we kind of miss out. और वहाँ Mr. Phenomenal has been asking कि यार about Man City, if I'm not wrong, जीतेगी UCL. यार कहने में क्या जाता है, चलो मैन सिटी जीतेगी यूसीएल, यार वी आर यूरोपियन चैंपियंस, लेट्स गेट इट राइट। अब मौका है, हर साल नहीं मिलेगा, बट हाँ मैन सिटी आर द बेस्ट टीम इन यूरोप, नो टू वेज अबाउट इट, वो भी बोलना चाहूंगा साथ में, एज इन दैट्स अ फैक्ट।
लेकिन absolutely great to hear that. Fateh, I'll take a prediction from you. Again, people in the chat, आप भी बोलिए, Salzburg versus Bayern, will it be an upset or just a score prediction? What do you think, Fateh? No, I think Salzburg will give them a good fight because Bayern's defense, as Usman Bhai said, everybody's looking at that defense and saying, okay, we can score goals against them. So I think Salzburg will be on the score sheet. I mean, everybody's been talking about Adeyemi. So, that's a name that is likely to light up Europe in the future. So, yeah, I think I'm going to go for a Salzburg to Bayern 3. Wow, that'll be interesting, huh? Knowing Salzburg and Bayern, मतलब एक proper end-to-end game होने वाला है, Fateh, and kudos to you for saying that. We look forward to that game, and of course, like I'll have, as always, two as in systems ready in front of me to make sure that happens. लेकिन yeah, a lot of Champions League talk, and it's time again. Barca fans in the house as well. I know patiently wait कर रहे हैं for Usman Bhai's views, and of course Napoli, क्योंकि हाँ, we have Serie A expert in Fateh that he is. So big game, like for Barca, as much as आप बोलोगे यार Europa League है, we're not looking forward to it, but it's a big game. Let's get it right, क्योंकि यार technically Barca are what, fourth in the league, Napoli are third, and third what, just 2 points behind AC Milan, and Yeah. Barca also last 2 हफ्ते दिखा रही है कि they are really coming up. So it's going to be a great game of football. मैं तो मतलब as a neutral, I am really looking forward to it, and not just that, tactics, Xavi and Spalletti. Let's get it right. बहुत लोगों को पता नहीं. This guy is actually a legendary manager in the European stage. So against Napoli, Napoli, I think knockout stages में has appeared the most number of times in Europa League, along with Ajax and Olympiacos. So they cannot be counted out at all. Barca on the other hand, first time Europa League में ले रही है, लेकिन UEFA Cup में भाग ले चुकी है. I know 17 years हो गए कि Champions League में they got eliminated the first time. But again, it's a great opportunity. Maybe I think it's the only realistic chance of silverware. लेकिन Usman bhai, having said that, all those talk, जब experience चाहिए, Dani Alves नहीं है squad में. I know Dani Alves probably is over the age of what you really want, लेकिन experience factor एक European football में लाता है that probably you cannot replace. Serginho Dest, as much as he's good, I don't know, like where do you judge Serginho Dest as compared to Dani Alves in the Barca team? I think Dani Alves would still be playing ahead of Serginho Dest. No disrespect, but Serginho Dest को बहुत ज़्यादा opportunities मिली हैं. छोटा मैच, बड़ा मैच, हर मैच के अंदर opportunities मिली हैं. Right wing पे खेलने के लिए, right back position के ऊपर खेलने के लिए. But he is not able to convince. So Yeah. मतलब नहीं किया convince. तो जब एक 39 year old बंदा आके आपकी जगह बहुत आसानी से ले लेना, इसका मतलब है कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे. इतनी कोई मुश्किल Correct. बात नहीं है. अब आप किसी और टीम में जाओ, क्या कोई ट्रेंट की जगह ले सकता है, क्या कोई जेम्स की जगह ले सकता है 38 ईयर ओल्ड? नहीं ले सकता. इसका मतलब है कि आपकी अपनी गलती है. सो हैविंग सेड दैट, आई थिंक डैनी ऑलवेज वुड स्टिल बी प्लेइंग इन द राइट बैक पोजीशन, बट ही इज नॉट रजिस्टर्ड, क्योंकि आप Not registered, exactly. इज नॉट रजिस्टर्ड, तो आप वो तो अब ऑप्शन है ही नहीं. अब आपको देखना पड़ेगा व्हाट यू विल डू. अनदर न्यूज़ इज दैट अराहो माइट मिस दिस गेम. वो नहीं, ही वाज नॉट ट्रेनिंग. तो अभी I'm not confident at all. I think last time जब बारसा कैंप नु पे खेली थी, it was 3-1, but that was a different story, different players. Messi was there and everything was like normal. मतलब बहुत ज़्यादा normal नहीं थी, लेकिन काफी हद तक normal थी. Now what we will do, I have no idea. I mean, forward line is fine. Adama might start. Ferran Torres is there. Pierre Aubameyang might also start. Then you have Gavi in the mix also, who nobody plays on that left hand side. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि maybe इस गेम के अंदर Aubameyang start करेगा. Midfield के अंदर वही Busquets. I would personally not. I will not start Busquets. लोग काफी ये कहते हैं कि यार Busquets से भाई एक्सपीरियंस, आई नो वो टचेबल नहीं है. चावी उसको बिल्कुल भी बेंच में नहीं करेगा, वो खेलेगा. लेकिन आई वुड नॉट गो विद बुस्केट्स, आई वुड गो विद फ्रैंकी डियोंग. लोग कहते हैं कि यार बुस्केट्स का एक्सपीरियंस है, वो टैकलिंग है उसकी, लेकिन मुझे तो पिछले मतलब पूरे सीजन में अंदर कोई टैकलिंग तो दिखी नहीं है. ही इज ऑलवेज रनिंग बिहाइंड, ही इज पुलिंग द शर्ट्स. भाई वो तो फिर फ्रैंकी डियोंग भी कर सकता है, वो भी कर लेगा. तो प्ले फ्रैंकी डियोंग एटलीस्ट लेग्स ज्यादा होंगी बुस्केट्स से. बुस्केट्स इज ऑलवेज बिहाइंड दैट प्लेयर, ठीक है, जो कि उसके आगे भाग रहा होता है, and he's trying to make those tactical fouls that can Frankie de Jong also do. I would personally go with Frankie de Jong, Gavi and Pedri, but I know this is not going to happen. Most probably this is going to be the lineup. Gavi की जगह
हो सकता है कि वर्मिंग स्टार्ट करे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, या फिर बिल्कुल ये भी हो सकता है कि गावी स्टार्ट करे और फेरन टोरेस की जगह वर्मिंग स्टार्ट करे। सो मोर और लेस यही लाइनअप है। राहु अवेलेबल नहीं है। अब ये आप बैकलाइन देखें, सीडीएम देखें, हाउ कैन आई से कि बारसा इज गोइंग टू विन दिस गेम? इट्स गोइंग टू बी अ ड्रॉ। Yeah, I'm kind of laughing. Sorry for that. लेकिन the fact is वही है कि यार मतलब Napoli is very strong and we'll come to Napoli 11 also. Before that ये question है I think for Usman bhai, are you happy with Barcelona not registering Dani Alves? मतलब they had a choice and they decided not to register him. अब एक इसकी चीज इसके बोला रीजन है। अच्छा या प्लीज go प्लीज ahead. प्लीज आप अपना क्वेश्चन नहीं कंप्लीट कर मैं लें यही पहले। बोला था यार अराहो जो आपने बोला बहुत ही अच्छा पॉइंट कि यार ही इज इंजर्ड तो आई नो ही इज नॉट अ राइट बैक इज अ सेंटर बैक लेकिन नोइंग द वे ही प्लेज वो कवर हो सकता था एट राइट बैक फॉर सच अ गेम क्योंकि वो एक सॉलिडिटी हम्म, लाता एंड मे बी वो गार्सिया पीके एंड अराहो कुड हैव जस्ट एक बैक फोर बैंक हम्म। ऑफ फोर रख सकते थे लेकिन अभी वो भी ऑप्शन नहीं है तो आई डोंट नो बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट किया। अगर अराओ अवेलेबल होता तो हम बैक थ्री के साथ भी जा सकते थे, एंड डाम्बा ट्योरे एंड अल्बा कुड हैव प्लेड ऑन एज विंग बैक्स, और फिर आप आके प्लेयर्स खा सकते। दैट वुड हैव बीन वन सॉल्यूशन अगर आपको थोड़ी सी सॉलिडिटी चाहिए। um, अगर अवेलेबल नहीं है, अब डैनी अल्वेस क्या लीग में होना चाहिए था या फिर यूरोपा लीग में होना चाहिए था? आई थिंक दे मेड अ करेक्ट कॉल बिकॉज ही इज रिक्वायर्ड इन द लीग, क्योंकि आपको टॉप फोर तो आपको फिनिश करना है। नो एक्सक्यूजेस, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, आप बिल्ड नहीं कर सकेंगे प्रोजेक्ट हालैंड, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू विल नॉट बी एबल टू डू अगर आप टॉप फोर फिनिश नहीं करते। एंड आई थिंक ही वाज मोर रिक्वायर्ड इन ला लीगा रादर देन इन यूरोपा लीग। यूरोपा लीग इज अ, let's be serious, it's a trophy but it's a qualification for the Champions League. It's that, I mean, जो मर्जी आप कह ले, ठीक है। तो आई थिंक टॉप फोर इज मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ, आई थिंक वाज अ करेक्ट कॉल। एक और ऑप्शन हो सकती है, अगर आप मैचेस जिसमें डानी अल्वेज खेलता है, आई मीन आई वाज वेरी इंप्रेस विद चावी इन दोस मैचेस। थोड़ा सा कुछ मैचेस में डिसअपॉइंट भी किया चावी ने, बट व्हेन डानी अल्वेज इज प्लेइंग ऑफ द बॉल, he is playing as a right back who's not going that much forward, and on the ball he comes into the midfield behind Araujo, just in between Araujo and PK. So this oh is something that a midfielder can also do. So I know I'm making a big call, but you can also, if you have to do this, you can play Nico also there. अगर आपने वो मैच देखा हो जो जिसमें डानी अल्वेज खेला था, ही वाज correct कमिंग इन बिटवीन, ठीक है। तो निको इज अ प्लेयर जो कि वहां पे खेल सकता है इन माय ओपिनियन। अगर आप डेस्ट से, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद डेस्ट एट ऑल, ठीक है। और आई डोंट वांट विद अडामा ऑन दैट राइट हैंड साइड प्रोवाइडिंग द वेट, आई डोंट वांट ओवरलैपिंग रन्स फ्रॉम डेस्ट ऑन दैट राइट हैंड साइड। मुझे लेफ्ट पे चाहिए जॉर्डी अल्बा हायर अप द पिच, उसकी क्योंकि उसकी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है डिफेंसिव लाइन पे। आई वांट हिम हायर अप द पिच along with whether it's Gavi or whether it's, because Gavi will, if Gavi plays on the left hand side, he has a tendency to come inside. So I would want someone like Jordi Alba on that left hand side. लेकिन अगर मुझे डेस्ट को हायर अप द पिच लेके जाना, आई वुड प्ले निको। एंड ऑफ द बॉल वही मैंने बात की, ऑफ द बॉल जो है वो राइट पे होगा, थर्ड सेंटर बैक, or with the ball he will be in the midfield and he will provide those extra legs to Busquets also. ग्रेट एब्सोल्युटली ग्रेट मतलब दैट वाज अ टैक्टिकल क्लास उस्मान भाई थैंक यू अगेन फॉर दैट मतलब नोइंग बारसा एंड नोइंग जावी मतलब दैट्स द थिंग दैट वो इतना ब्रिलियंट क्यों है मैच मतलब नापोली loves to experiment and Xavi is a person who's experimenting अभी literally like वही बोल सकते हैं right तो इसलिए मतलब for a neutral I'm looking forward in a strange way I've gone on record saying that यूरोपा लीग matches बहुत सारे मैचेस है जो बहुत मतलब as in competitiveness रहेगी मैच में that is what I'm looking forward to लेकिन फतेह coming to you, like again, Napoli hats off to Koulibaly. Coming off Oh, that AFCON win and weekend में क्या खेला यार Koulibaly, like he was on a different planet against Inter if I'm not wrong. Inter. Back to Absolutely. his best. I don't know, but confidence is alag level. So, do you think Koulibaly has enough even now to do it consistently and will be very strong compared to the Barca strikers? Will he get the better of them? What is your call? But does Koulibaly start? That's the first question. I Why know not? that because I think, look, Napoli have a great chance of winning the league title. They're welcoming Milan at home. You said they're 2 points off the top spot. That squad again, one of the problems with a lot of these Italian teams is we don't have a lot of bench strength. So I mean, the squad that you've put in here, that's the kind of team that you would say they'd probably be putting in the league game. So I mean, look, Koulibaly.
against Inter in that first half, Napoli absolutely clobbered us. They could have scored maybe two, maybe three. So, but I do think having played a grueling AFCON, having come right back into the team and playing these games, I actually think that Spalletti will be chopping and churning. I don't think Koulibaly plays that game. I'm क्योंकि नहीं, I'll tell yeah, you why. My logic is इतना चेंज भी नहीं करना चाहेगा because at the end of the day, like Napoli, as much as हाँ लीग में they bottle it in the Sari, let's be honest, couple yeah. of years ago. लेकिन again, like it's a cup trophy, and Napoli, like historically, I went on saying that he are one of the most, as in frequent teams in the No, round of I mean, 16. look, लेकिन this is winners, we forgot Ankit to mention this is the Maradona derby. I mean, in exactly. his year of you know look at the kits that Napoli are going to be putting out. I mean, it's fantastic. I mean, yes, I get all the history, but I know Spalletti. I know that he will still be playing some of those guys. I mean, I think Dries Mertens is going to be playing this game. I don't know whether Osimhen plays because Osimhen has also just come back into the team. Wearing a mask, horrible injury, but they need a Correct. player like Osimhen for the league title, for that league charge. And I think Napoli, a lot of people are saying Inter Milan, AC Milan, Napoli are right in there. So, and they've hit form again. So I think they'll be chopping and changing this team. You've put Anguissa in there. Anguissa didn't start against Inter. So yes, I do expect Anguissa to play. I think it's either Insigne or Mertens. I think Koulibaly gets rested in one game. I definitely think Koulibaly gets rested in one game. Maybe it's going to be the latter game because they've got AC Milan coming up then. But if this is the team that you've put on right here, then yeah, I mean, I think people again, a lot of people outside They have Serie injuries, A by the do way. not Yeah. know. Yeah, a lot of Yeah. people don't know Piotr Zielinski. I mean, the crackers that he comes up with from outside the box. And Usman Bhai mentioned Busquets is generally chasing. So if Busquets is looking to make tactical fouls, it's probably going to be Zielinski running rings around him. So I mean, I'm look, this is a actually great team. I'm actually terrified with the pace of of Napoli here. मतलब Yeah, कौन रोकेगा, absolutely. किसके पास है पेस? मतलब आई जस्ट डोंट गेट इट. मतलब अल्बा और Politano डेस missing से है, by मुझे the way. Huh? एक्सपेक्टेशन नहीं है. Politano यहाँ पे is पीके. injured. Politano picked up an हाँ. injury. Uh, हम्म, but again, Dries Mertens off the bench. Again, a player हम्म. that hasn't been starting in the league. I expect him to be playing against Barcelona. Very tricky, pacey. I mean, if Osimhen is starting, then yeah, I mean, pace, Barcelona does get beaten up. But can Anguissa and Fabian Ruiz control the midfield? Or, because if De Jong and Pedri are starting, if Barca have most of the possession, then I think Barcelona will be able to manage it. I mean, for me, Barcelona are the favorites here because I know that Spalletti will actually be resting some players. Yeah, Usman भाई आप बोल रहे थे कुछ Fateh is putting Barca as favorite. Usman भाई is scared of Napoli. I don't know. अब बोलिए आप. Yeah, मतलब if Arahu was there, I would have been more confident because Arahu provides a lot. He has the pace. मतलब I have seen so many times कि Arahu bailing us out with his pace and his positioning. उसके पास heading ability भी है. Really is also very good और threatening एक option रहती है आपके पास defensively भी और offensively भी. With Arahu out, guys, I don't see pace. मतलब आप तीन बंदे देखें, उनको कौन कवर देगा? बुस्केट्स को कवर देना होता है सेंटर बैक को, या फिर सेंटर बैक को कवर देना होता है बुस्केट्स को. तीनों के पास पेस नहीं है. बुस्केट्स के पास भी पेस नहीं है, एरिक गार्सिया के पास भी पेस नहीं है, और पीके के पास भी पेस नहीं है. तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू? दैट्स द थिंग that is scaring me the most. तो I know Barca can score, but I think they will concede also. I think they are going to concede 2 goals, and that's going to be huge for Napoli. एक तो clean sheet तो I would be like surprised and shocked to death कि अगर बारसा क्लीन शीट रखती है. बट मतलब एक दो गोल तो मैं आसानी से देख रहा हूँ यहाँ पे नेपोली के. एरिक गार्सिया के पास डिफेंडिंग नहीं है यार. एरिक गार्सिया, देखो, जब एरिक गार्सिया ने स्टार्ट किया था ना इंजरी से पहले चावी के अंडर, ही वाज एक्चुअली गुड. एरिक गार्सिया के पास पेस नहीं है, एरियल स्ट्रेंथ भी नहीं है. ही हैज टू बेसिकली सी द वीडियोस ऑफ माशेरानो. माशेरानो वाज द परफेक्ट प्लेयर इफ यू डोंट हैव द स्पीड. उसकी पोजीशनिंग, उसकी टैकलिंग वाज ऑलवेज पिन पॉइंट. सो माशेरानो इज अ प्लेयर दैट ही शुड ऑलवेज बी लुकिंग एट अगर उसको इंप्रूव करना है. अदरवाइज ही इज ऑलवेज गोइंग टू स्ट्रगल. यार, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट गेम. यहाँ पे यार एक कमेंट आया था, आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दैट कमेंट, वो टॉप 4 वाला. यार प्रॉब्लम पता क्या है?
अगर स्पर्स टॉप 4 के लिए फाइट कर रही हो, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट कंपेयर स्पर्स टू एफसी बार्सिलोना, ठीक है? आप उसको कंपेयर ना करें, आप स्पर्स को आर्सेनल से भी कंपेयर ना करें, ठीक है? दैट्स अ क्राइम राइट नाउ, बिकॉज स्पर्स आर डेस्परेट फॉर अ ट्रॉफी। वो किसी भी ट्रॉफी के ऊपर जाएंगे, वो ईएफएल कप भी होगा तो उसके ऊपर भी जाएंगे। सो डोंट कंपेयर विद स्पर्स विद दीज टीम्स। अगर बारसा बारसा अगर बीइंग अ बारसा फैन या मैनेजमेंट है, दानी अल्वेस को क्यों उन्होंने लीग में सेलेक्ट किया? क्योंकि वहां पे ज्यादा आप कंसिस्टेंसी शो करें तो ज्यादा चांस है टॉप 4 का। इधर एक गेम आपका बुरा जाता है, यू कैन बी नॉक्ड आउट ऑफ द चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग, ठीक है? और फिर यूरोपा लीग में से बाहर होते हैं तो चैंपियंस लीग स्पॉट चली जाएगी। सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट अबाउट ट्रॉफी, इट्स अबाउट कि किस चीज की इंपॉर्टेंस ज्यादा है गोइंग इनटू द नेक्स्ट सीजन। आप ऑलरेडी ट्रांजिशन के अंदर है। यूरोपा लीग, अगर यूरोपा लीग जीतते हैं तो चैंपियंस लीग स्पॉट भी आ जाएगा, बट दैट्स अ हार्डर रूट, ठीक है? टॉप 4 इज नॉट दैट हार्ड कंसीडरिंग जो सिचुएशन बारसा की अभी बनी हुई है। दे शुड बी फिनिशिंग टॉप 4। सो दैट वाज माय पॉइंट। ट्रॉफी इज अ ट्रॉफी, आई कैन अंडरस्टैंड, बट कंसीडरिंग द सिचुएशन, टॉप 4 उस रूट के थ्रू जो है वो चैंपियंस लीग स्पॉट ज्यादा इजी है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। That's what I'm 100%। और saying. See, generally, when you're a big club, if you are playing a Europa League quarterfinal or a semi-final, that's where you start bringing your best players in. मगर यस उससे यस यस। पहले आप अपने बेस्ट प्लेयर्स को नहीं डालने वाले हो. That's राइट, that's true for Javi. That's true for Spalletti as well. Because see, he's right in the league. You know, Napoli was leading the league title last year, so he can't just go on and play the same starting 11 against Barcelona. Similarly, Javi cannot be expected to play his best teams. In the Europa League, one bad match, one sort of mistake in a knockout game, you're out. But in the league, you have the chance. You have more games coming up. You have the chance to sort of. There's always a tomorrow. So I think you have to concentrate on the league. Both these teams, I know they are massive names. Both of them should be playing in the Champions League next season. But for this season, I think they will both be, resting a few players. You can expect three, four changes in both the games. And if Barcelona are worried with pace, if Osimhen plays, yes. But I do think that they'll rest Osimhen. I think Petania starts this game, and Petania has a physical presence, but I don't think he has the pace. So I mean, यस, you यस। you could be very surprised if it ends 0-0 also. यार कम ऑन यार, फतेह, वी डोंट वांट नील नील प्लीज। कल मैं वही हुआ ना, दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड। आई थिंक उस्मान भाई लेट ज्वाइन किए थे। उस्मान भाई कल क्या हुआ था ना, मैं 90 मिनट के लिए वेट किया, मेसी का पेनल्टी मिस देखा, 90 मिनट तक वेट किया, फिर नींद आ गई। एंड देन यू नो सुबह उठ के वापस अच्छा देखे, ओह माय गॉड, इंजरी टाइम में ना यार ये मिस एम्बापे स्कोर। Oh my God, लेकिन that's what football brings up. मतलब especially in Asian countries. Again, big shout out to people internationally who follow. हम जानते हैं जो पेन है। I think अभी पता चल रहा है उस्मान भाई को. I know he kind of travels as well. सही बात है। So that's how it is. Yes, but Michael talks football again. Great channel again. Thanks for joining, buddy. Europa League is very open this season, but we are addicted to this tournament plus hosting the final. And I'll come back to this. लेकिन उस्मान भाई एक क्वेश्चन मैं जरूर पूछना चाहूंगा जो मेरे मन में डेफिनेटली है। लास्ट 2 हफ्तों में पता नहीं क्या चेंज हुआ है, या तो अडामा ट्रायोरे बेबी ऑयल लगाना छोड़ दिया है, आई डोंट नो, और मे बी जावी हैज गॉट सम मैजिक पोशन जो वो लगा रहा है, पेल रहा है, आई डोंट नो अपने बॉडी में। व्हाट हैज चेंज्ड एज द जावी जो अडामा ट्रायोरे सडन से असिस्ट कर रहा है? एंड आई नो यू फॉलो योर इंग्लिश प्रीमियर लीग अ लॉट। वुल्व्स में ही कुडंट काइंड ऑफ बाय एनीथिंग, क्या डिफरेंट किया है टैक्टिकली? आई थिंक वो राइट साइड, मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि कोई चीज टेक्निकली चेंज हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा, मुझे पर्सनली फील लग रहा है कि अडामा ट्रायोरे पे बात हो रही थी। मेरा एक ओपिनियन था ये कि डेम्बले से रिलेटेड, मुझे ऐसा लगता है कि डेम्बले इज मोर स्किलफुल देन अडामा ट्रायोरे, बट जो डेम्बले प्रोवाइड कर रहा है वही अडामा ट्रायोरे भी प्रोवाइड कर सकता है और वो कर रहा है, ठीक है? ही इज गोइंग पास द प्लेयर्स, विथ प्रोवाइड कर रहा है। और प्लस क्या है अडामा ट्रायोरे का कि ही इज फिट, ही इज मोर फिटर देन डेम्बले। तो ये तो डेम्बेले मैंने एग्जैक्टली। चीज मेंशन, जब कंपैरिजन किया था ये मेंशन की थी। हाँ, बहुत अगेन आई वुड से कि उसका पोटेंशियल ज्यादा है, ही कैन रीच व्हाटएवर, लेकिन अभी तक उसने वो रीच नहीं किया 4 साल के अंदर। तो अभी जो दोनों ने किया, मैं उसके ऊपर, दोनों की आउटपुट सेम है, ठीक है? फिट ज्यादा अडामा ट्रायोरे है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चेंज नहीं हुआ। अडामा ट्रायोरे इज डूइंग व्हाट ही वाज डूइंग। कभी कभार क्या होता है कि यू जस्ट डोंट गेट इट राइट, आपको नहीं निकल रहे होते गोल्स, कभी कभार नहीं असिस्ट नहीं कर रहे होते। आई थिंक अडामा ट्रायोरे इज डूइंग हिज जॉब। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रॉसेस ज्यादा आ रहे हैं, जो कि वुल्व्स में वो बहुत कम करता था। इसमें यह है कि ही इज डूइंग मोर क्रॉसेस, जिसकी वजह से ज्यादा असिस्ट नहीं कर रहे हैं। और एक और चीज भी नजर आ रही है कि ही इज टेकिंग शॉट्स, ठीक है? अभी तक वो कन्वर्ट नहीं हुए, बट ही इज टेकिंग शॉट्स।
वहां पे उतनी ज्यादा शॉट्स नहीं लेता था. इट वाज मोस्टली के वुल्स जो है वो सिट बैक करती थी नूनो के अंडर ज्यादातर, और ही वाज हिटिंग देम ऑन द काउंटर अटैक. यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बॉल ज्यादा मिलती है उसको, ठीक है, जिसकी वजह से उसको उसको असिस्ट करने का या गोल करने का चांस उसके पास ज्यादा है. एंड दैट्स व्हाई यू विल सी अडामा हैविंग मोर असिस्ट. लेकिन मैं बहुत ज्यादा हाइप नहीं करने वाला गाइस. प्लीज प्लीज थोड़ा सा वेट कर लें, जरा 10 गेम्स देख Exactly. लें, कंसिस्टेंसी देखें, फेरन टोरेस सबकी देखें. आई रियली होप कि अच्छा रहे, बट आई थिंक अडामा ट्योरे 6 months अगर डेम्बले चला जाता वुड हैव बीन, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे. आई थिंक इट वाज इक्वल फॉर मी. या मतलब वही है, मतलब जावी क्रेडिट देना चाहेंगे यार. मतलब आई नो 2 हफ्ते हो गए लाइक उस्मान भाई सेड, लेकिन वही है कि ही इज गिविंग हिम कॉन्फिडेंस वो क्रॉस करने के लिए. मे बी वो वुल्स में ही वाज नॉट गिवन दैट काइंड ऑफ रोल, और या ही इज बैक होम एज वेल. लेकिन या वी स्पोक अबाउट आई थिंक कमेंट्स से अबाउट अदर टीम्स एंड इट्स यूरोपा लीग बहुत ही कॉम्पिटिटिव है. एंड हमने बात किया था लास्ट जीशान भाई थे चैनल पे, एंड वी एक्चुअली वेंट थ्रू द टीम्स एंड द फिक्सचर्स जो है अभी नॉकआउट एज इन प्लेऑफ्स में. एंड मतलब अनगिनत नंबर ऑफ टीम्स, एंड वी कुडंट डिसाइड कि विच इज दैट टीम जो यार फेवरेट है. मतलब नॉट इवन अ सिंगल टीम टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारे टीम्स हैं. फतेह, आई पुट यू ऑन द स्पॉट. I know in the Europa League you're a neutral as well like me. Like what do you think? Which first of all ये poll लिया है, people take that poll. First of all, which country से होगा winner और कौन होगा winner according to you? Europa League early prediction, and I'm going to clip this. See, I think it's too early to talk about who's going to win the Europa League. Uh, who are the British teams? वेस्ट हैम यूनाइटेड, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओनली लेस्टर बाहर हो गई राइट, क्योंकि हाँ इनके ग्रुप में थी, नापोली के ग्रुप में थी लेस्टर, तो लेस्टर बाहर हो गई है. दे आर इन कॉन्फ्रेंस लीग नाउ इफ आई एम नॉट रॉन्ग. And so West Ham United is the one, and I think I've taken the polls. In I think German teams काफी है. Leverkusen is there, Frankfurt है, who not bad, and of course Spanish team Sevilla is there. And then I'll go with Dortmund, Sevilla or Sociedad. I think Sociedad are in there. I think Betis. Sevilla, Sociedad, somebody like that. Then Yeah, because but I come don't on, like think let's pick one. Again, मतलब यार, come on, I'm not going to punish you, or anyone's not going to punish you. Just pick one. my heart would love to see Lazio win it. Sarri has won it earlier on. I Correct. don't think they'll make the Champions League in Italy. I don't think that's going to happen. So I mean, I would love to see Lazio win it, but they're taking on Porto. Porto with Sergio Conceição. I mean, Porto was so good against AC Milan. So I mean, I know that Lazio could be out here, but that's the team that I want to see winning this tournament. But I don't think Barcelona are going to win it. I'm sorry, Usman bhai. I don't think Napoli are going to win it. I don't think these clubs will care enough. Sevilla, if they're out of the league race, definitely Interesting, go interesting. look for those teams. I mean, don't look at the names. Dortmund. I think I'm very certain not going to win it. Yeah, I'll come to Dortmund. उस्मान भाई बात करेंगे 2 मिनट. लेकिन उस्मान भाई, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि बार्सिलोना जीतेगी कि नहीं. इतना बता दो आपके हिसाब से गट फील है. मतलब अगेन सबको कुछ नहीं पता, लेकिन यार हमें एक गट फील कौन आती है सी राइट. कौन सी 2 टीम चाहता हूँ कि मैं जीते, वो पहले मैं बता देता हूँ, बार्सा एंड चलो, डॉर्टमंड. लेकिन आई एम नॉट ओके, रियली श्योर. नो और कौन सीक्रेट्स. सी और कौन सी टीम जीतेगी? सविया है और नेपोली Betis. है, बेटिस है, बट आई डोंट सी बेटिस. आई थिंक सविया. Sevilla, आई एम oh गोइंग wow, टू हाँ गो मतलब फॉर सविया. they are there, हाँ यूरोपा लीग में they have their history, मतलब no two ways about it. लेकिन गुड कॉल देयर. और बारसा, एक गट फील है, कहाँ तक पहुंचेगी? Will they be able to knock out Napoli? What is your Yeah. two-leg prediction? Putting you on the spot, I know, but I'm Usman bhai. I'm telling you, Barcelona will beat Napoli. I think Spalletti, he gets in. He sometimes gets in his own way. I don't think you'll not really see the real Napoli here. So I think Barca beats Sevilla. Barca beats Napoli. I was actually little bit convinced and I was actually confident. जो पिछले मुझे 4 5 6 7 मैचेस से परफॉर्मेंस बारसा की देखने को मिली है. The only concern for me, as I said, is Araujo is out, but I'm still going to go for a very narrow win for Barcelona over the 2 legs. Yeah. I think it's going to be a 4-3, 4-3 wow, kind of a thing, or maybe on penalties. some pain for Barca fans, and I think Napoli fans. Napoli are cup tournaments में, that's something, like the romanticism is there.
What Yes, about Fateh. Leipzig? Can Leipzig do it? Oh yes, yes, absolutely. Let me check the poll because again people do take the poll because we are like really stuck with the options. Leipzig is awesome. Like they have some really good players like Nkunku, Forsberg of the likes. Well, I get that point. Like German teams like have the German mentality also. Like so we cannot put them out. But talking about German teams, Dortmund for Rajat quickly. I know you said Usman Bhai about Dortmund. You wanting them in final. लेकिन उस्मान भाई एज अ सीजन क्या मिसिंग है डॉटमंड इतना अप एंड डाउन क्यों हो रही है मतलब आई नो लॉट ऑफ डिफेंस स्पेकुलेशन अबाउट हालैंड डिफेंस नहीं है ठीक उनकी, Defense, yeah. और अगले सीजन इनका अटैक से ही नहीं होगा। तो Hmm. ये तो साइकिल है, चलता रहेगा। सो डोंट, आई मीन, थिंक अबाउट डॉर्टमंड विनिंग Bundesliga or anything anytime soon. As I said, I would want Dortmund to win something, but I mean they have only themselves to blame. So कुछ समझ नहीं लगती उनकी कि वो क्या करना चाहते हैं। आई नो, मैंने थोड़ा सा उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि उनको सेंटर बैक की जरूरत है, एंड दैट्स व्हाई गॉट सूल, बट दैट्स अबाउट इट। बट दे आर गोइंग टू लूज हॉलैंड, वहां से गोल्स निकल जाएंगे। आई डोंट सी एडीएमई उतनी ज्यादा गोल आउटपुट प्रोवाइड करे जो कि हालैंड कर रहा है, बट आई थिंक दे आर गोइंग टू गो फॉर एडीएमई। they are not never going to be stable, मुझे ऐसा लगता है। they have to change structurally, otherwise they are never going to be stable। वो compete नहीं कर पाएंगे कभी भी बायर्न म्यूनिख से। या मतलब फेयर पॉइंट और यहाँ पर पोल के रिजल्ट्स भी आ गए हैं अभी मैंने पोल इन किया जस्ट अबाउट तो I think इंटरेस्टिंगली लोग सोच रहे let's look at Lyon also. I think another dark horse. I mean, ओ Lyon, यस यस Atalanta is लियोन also there, okay। करेक्ट Atlanta इतने have सारे injuries. Atlanta, I think, Duan Zapata is Hmm. almost out for the whole year, so it's going to be very Okay, difficult for them. करेक्ट करेक्ट I think it's सो going to be Sevilla। सविया I'm या betting मतलब on वही है Sevilla। मतलब गोइंग विद द ट्राइड Barca एंड or Sevilla? टेस्टेड No, या फेयर इनफ but don't put my vote for Sevilla. I want to see Lazio win something. I think it's been so long since an Italian team won something. Europa League, we came so close at Inter, and to be honest, Lazio will probably be out against Porto. And why are we not considering Porto? I mean, they were such a यार सर्जियो ओलिवेरा इज नॉट देयर फर्स्ट ऑफ ऑल एक ह्यूज okay. मिस फॉर मी आई डोंट नो हाउ कुड दे लेट हिम गो ऑन लोन लाइक फॉर आई नो इतना फॉर्म में नहीं है बट Yeah, मेरे लिए सर्जियो ओलिवेरा काइंड ऑफ मेड देम क्लिक ही मिस्ड दैट वन टाई वन लेग अगेंस्ट अस अगेंस्ट चेल्सी लास्ट सीजन और वो दिख रहा था मतलब व्हेन ही वाज बैक दैट डिफरेंस वाज क्लियर फॉर मी सो दैट वाज रियली स्ट्रेंज बट हाँ मतलब पोर्टो दे कैन प्ले डर्टी एज वेल वीकेंड में हमने देखा स्पोर्टिंग के साथ अबाउट द रेड yeah, कार्ड सिचुएशन दैट वी कवर्ड yeah, यस्टरडे स्ट्रीम में लेकिन हाँ वो मतलब वो great वो calls वो there. जो पोर्टो से एथलेटिको मैड्रिड मैच था, yeah, तो दे Yeah, कैन yeah, वो भी डेफिनेटली, तो बड़ा रेसलिंग मैच था वो जो आखिर में हुआ था। एग्जैक्टली मतलब रियली इंटरेस्टिंग होगा बट हाँ कुछ लोग बारसा के लिए जा रहे हैं एंड दैट्स गुड टू सी लेकिन आई थिंक यहाँ पर हालैंड की बात कर लेते हैं क्विकली उस्मान भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट मतलब एक होता है ना यार पता है कि वो छोड़ने तो वाला है डॉटमुंड लेट्स बी रियल लेकिन डू यू रियली सी हिम इन रियल मैड्रिड विद एम्बापे एंड बेंजेमा स्टिल नॉट फिनिश्ड मतलब ओवर क्राउडेड नहीं हो जाएगा और मैन सिटी जहाँ पर फुटबॉल ही खत्म हो जाएगी नहीं, देखो, अगर बेंजेमा एक साल और खेलता है एंड देन बेंजेमा लीव्स, ठीक है, let's consider this, then Haaland, Mhm. Mbappe, Vinicius, that works, that is perfect world, and they need Yeah, yeah. a striker. Haaland can play wide also, right? So that is perfect. But if I'm Haaland and if Real Madrid is telling me, okay, we are going to get Mbappe for free, हमें बेंजेमा को भी एक साल और कराना, तो प्लीज जो है वो एक साल जो है वो हिट कर लो। Why would I do that? yeah. I would not do that if I'm Correct. Haaland. I would go to Yeah, Manchester City. I yeah. would go I to mean, Barcelona. I would go anywhere. I would go to Chelsea, PSG Chelsea. also. So why Chelsea also? But Lukaku, I don't know, Inter, do you want him again, Fateh? no money, no money. नहीं नहीं, I अब think the But इंटर he's names ही very that are good. जाना being named. चाहता है वो, इंटरव्यू के हिसाब से वो इंटर ही जाना चाहता है, और वो उनके पास पैसा नहीं है, तो लुक आप यू आर स्टक विद You लुकाकू, are तो stuck. हालैंड नहीं आपको You मिलने can, वाला। you should अरे exchange him. You should exchange him with Kane. I think Conte will get the नहीं नहीं best out नहीं of अरे Lukaku. फतेह कम ऑन अभी फाइनली what technically he is the highest scorer for Chelsea this season Yeah, 10 yeah. गोल मार No, दिया है I'm तो very, I'm telling you, he'll still get 20 goals for you. And Haaland, I'm very certain he'll go because of his father's connection to Man City. I think Kane stays at Spurs, मैं and बोलूँ एक चीज what about him going to Manchester United or maybe Kane going to Manchester United and then maybe as in domino effect हो सकता है I don't know
विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो दे आर स्टिल देयर, ये होने नहीं वाला। मतलब फिर आप कहाँ फिट करोगे हालैंड एंड रोनाल्डो कांट। यार काफी ज्यादा लोग इस पे गुस्सा कर देते हैं गाइस, द रियलिटी इज दैट रोनाल्डो कांट प्ले ऑन द विंग्स एनीमोर। he उसकी best position अब inside the box है, you have to basically understand that, and if his best position is inside the box at 37 years old, how would you fit Harry Kane or Haaland in that team? तो ये आपको फिर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और हालैंड को आप या केन को बेंच पे तो नहीं बिठाओगे, या रोनाल्डो को भी आप बेंच पे नहीं बिठाओगे, ऑल्दो उसने बिठाया है राफेक ने, लेकिन आई डोंट थिंक सो। अगर रोनाल्डो जाता है पीएसजी, अगर एम्बापे छोड़ के आता है पीएसजी, मेसी, वो ड्रीम, मतलब फिर वो चैंपियंस लीग भूल जाए, वो ड्रीम खेलते रहे, तो चैंपियंस लीग वो भूल जाए अगर उन्हें रोनाल्डो और मेसी को लेके आना है टीम में। बट खैर मैं कहना चाहता हूँ कि आई थिंक हालैंड, बार्सिलोना विल गो फॉर हालैंड, दैट्स फॉर श्योर। मतलब अभी तक सबसे बड़ा लिंक जो है वो बार्सिलोना से ही आ रहा है उसका। सिटी विल डेफिनेटली गो फॉर हालैंड एंड पीएसजी इज आल्सो गोइंग टू गो फॉर हालैंड। अभी पीएसजी सिर्फ चुप करके बैठी हुई है क्योंकि वो एम्बापे की सिचुएशन को खराब नहीं करना चाहती है। एज सून एज एम्बापे इज फाइनलाइज्ड दे विल गो फॉर हालैंड। इंटरेस्टिंग। हाँ, मतलब पीएसजी क्वाइट पॉसिबल लग रहा है, लेकिन हैविंग सेड दैट एक और डॉर्टमंड प्लेयर है और वो है बेलिंगहम। मतलब सच में, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट यंगस्टर्स इन यूरोप अलोंग विद ग्रावेनबर्ग, व्हिच आई थिंक फतेह से बात हुई थी लास्ट टाइम, आई रिमेंबर। लेकिन रियल मैड्रिड, आई थिंक चैट में पूछ रहे थे रियल मैड्रिड। नाउ रियल मैड्रिड की वी ऑलवेज स्पीक अबाउट टोनी क्रूस, मॉड्रिच बीइंग इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ अगेन, लेकिन यार वी ऑल नो एज इज समथिंग एट सम पॉइंट, राइट? तो don't you see like Bellingham, maybe can be a future for maybe a Real Madrid kind of club? Like Fateh, what do you think? Oh, absolutely. I think Real Madrid will be in the market because even Modric, so with Modric and Cruz need to be replaced. Yes, they have a great academy. They have some fantastic players even now. But totally, I think we are going to see a revolutionized Real Madrid next year. Mbappe, I don't think they'll go for Bellingham straight away next year, but somewhere in the future. Maybe after the World Cup. करेक्ट। वही मतलब आई डोंट नो उस्मान भाई, डॉर्टमंड ऐसी क्लब है ना जो मतलब सक्सेशन प्लानिंग करती है, एक एक करके निकालती है, मतलब दे चेंज क्विकली। आई डोंट थिंक दोनों जाएंगे, राइट उस्मान भाई, नेक्स्ट सीजन? नहीं, दोनों नहीं जाते। मुझे बेलिंगम और हालैंड दोनों जाते हुए नहीं एक विंडो में दिख रहे। दैट्स द ओनली गुड थिंग दैट दे डू। करेक्ट। और यहाँ पर जेवी के इज आस्किंग हु डज हालैंड वांट टू प्ले फॉर? लाइक आई वुड लाइक टू से चेल्सी, लेकिन आई थिंक probably from what I know उसके डैड बोले मैन सिटी, if I'm not wrong. I don't know whether it's हालैंड कि क्या, what do you think? अच्छा, मीचू ने भी एक दिया था। मीचू इज आल्सो वेरी क्लोज टू, उसने कहा था नॉर्मली जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि ही वांट्स टू प्ले। मतलब उसने खुद तो कहा नहीं ना, उसके एजेंट ने ये कहा है, बट जितनी भी क्लोजेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं दैट ही वुड वांट टू प्ले इन स्पेन, बट दैट कैन चेंज वेरी क्विकली। इंटरेस्टिंग, काफी अच्छा। एंड अगेन हम यार स्पेकुलेशन तो हमेशा कर सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट वी लाइक टू लव। How does Barcelona afford him though? Like, I know we don't have any money. So there was news that Barcelona के पास भी पैसा नहीं है, but then अब कैसे? How are you affording 75 million? Then Raiola, then the wages. I think it is going to be a very difficult task. अभी यहाँ पे लोग हालैंड की बात कर रहे हैं। मुझसे आप पर्सनली पूछें तो आई नो कि अभी हालैंड आएगा तो अभी आएगा, वरना कभी नहीं आएगा। ठीक है, हालैंड विल मेक अ मूव। इफ यू गो फॉर हालैंड वो आएगा, वरना उसके बाद आप उसको साइन नहीं कर पाएंगे। That's for sure. If you ask me, Haaland is more required or a defense line पूरा overhaul required है? Defense line overhaul required। आप Haaland ले आओ। Haaland डॉर्टमंड में भी तो है ना, क्या कर रहा है वो? क्या मतलब गोल्स तो अपने स्कोर कर रहा है, बट दे आर डूइंग नथिंग बिकॉज़ देयर डिफेंस इज पुअर। और बारसा की तो उनसे भी बुरी डिफेंस लाइन है। तो हालैंड आ भी जाएगा तो कुछ नहीं कर सकेंगे। हालैंड को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? स्पॉटिफाई के साथ डील हो चुकी है बारसा की, जो कि हेल्प करेगी, बट दे हैव टू ऑफलोड मैसिव अमाउंट ऑफ प्लेयर्स। ग्रीजमैन टू एटलेटिको मैड्रिड शुड बी अ मस्ट, ठीक है। कोटिन्यो टू एस्टन विला शुड बी अ मस्ट। फिर ट्रिंकाओ के जो पैसे हैं वो आपको आएंगे। You have to offload Umtiti, you have to offload Langley, you have to offload I think one or two other players। फिर क्या नाम था उसका? डेम्बेले बोलिए ना? डेम्बेले will be going, right? अगर वो extend नहीं करता, सैलरी will be saved, right? I think एक और मिडफील्डर है जो हमने लोन के ऊपर दिया हुआ है। come on यार, जो यूवेंटस में, हाउ कैन आई फॉरगेट हिज नेम? यूवेंटस से जो नहीं आर्थर से स्वैप किया था ना उसको, पियानिच। वो भी लोन के ऊपर है, ठीक है। वी हैव जस्ट फॉरगॉट अबाउट इट, ठीक है। तो आपको ये सारा चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। लेट्स सी कि मैनेज कर पाती है कि नहीं बारसा, ओनली देन इट्स पॉसिबल। अभी तो स्पेकुलेशन है। मेरे से कोई पूछता है तो आई एम सेइंग कि यार हालैंड जब आना होगा ना तब बात करेंगे, अभी कितनी बात करें इसके ऊपर।
Right, right. I think well, right. That was actually Pjanic or Moriba. I think he's moved already. If I'm not wrong, he was. He moved permanently to RB Leipzig, and now he is in another Spanish team, Valencia में पता नहीं किधर है वो. विलारियल या वेलेंसिया में दैट्स व्हाट आई हाँ कवर्ड कुछ मेरे ऐसे है. अपने चैनल में वहां पे लेकिन भी नहीं हाँ उसको खिलाया उन्होंने. मतलब ही स्टिल कहीं पे वेरी नहीं यंग खेल रहा वो. एग्जैक्टली एग्जैक्टली लेकिन अगेन मतलब लॉट ऑफ पीपल वाचिंग एक बार मैं डेफिनेटली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन डेली फुटबॉल मैडनेस इफ इन केस आपने नहीं किया सब्सक्राइब प्लीज गो सब्सक्राइब और ऑलमाइटी ब्लूज एफसी भी यार कम ऑन इट्स जस्ट अ प्रेस ऑफ अ बटन हमेशा बोलता हूं एंड बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा सो दैट व्हेनेवर वी आर लाइव और उस्मान भाई इज लाइव सो दैट एक डिस्कशन होता है तो ज्यादा मजा आता है लेकिन वी आर जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन विद द डिस्कशन बिकॉज ऑफ द चैट नहीं तो यार हम वी जस्ट गो ट्राई एंड टेस्ट व्हाटएवर वी हैव yes, I think it was Valencia. Thanks, Akshat Gupta. And Ricky Boo, I think was injured, if I'm not wrong, नहीं? Correct? I think Ricky Puig मुझे I'm not really into Ricky Puig because it's Yeah, मतलब अब तो कोई फायदा ही नहीं है ना. He is way down in the pecking order. मुझे लगता है वो injured नहीं है. I think he is available. बट इतने ज्यादा मिडफील्डर हो रहे हैं अब यहाँ पे निको को चांस नहीं मिल रहा. यहाँ पे अगर आप वाइड प्लेयर खिलाते हैं तो गावी, बुस्केट्स और फ्रैंकी डियोंग और पेड्री में से आपको एक प्लेयर निकालना पड़ता है. निको उसके बाद आता है तो इट्स अ हेडेक राइट नाउ. रिकी पूच आई थिंक द बेस्ट थिंग फॉर रिकी पूच इज टू लीव ऑन लोन. अगर वो उसको सेल नहीं करना तो एटलीस्ट उसको लोन पे तो भेजो, वो खेले तो सही कहीं पे. fair enough. Then again, great conversation. I know 1.5 घंटे से बात करें. Again, thanks for the panel and everyone जो भी देख रहा है. Again, like करिएगा, stream को share करिएगा. It certainly helps. लेकिन last but not the least, like Fateh, platform is yours. Please do follow Fateh. मतलब he knows his stuff. आपने सुना ही होगा. जो लोग नहीं सुना है, please go back and check the stream. And हमने Euros cover किया था. Hopefully, we'll cover a lot more together, brother. Anything that you would like to share about Inter Milan? What's your last feeling about tonight, or maybe just the season? I definitely want to win the league. Because if we win the league, that means 20 league titles, 2 stars on our crest. I badly want that. Other than that, I'm not really too fussed about the Champions League just yet. I mean, if we can just win the league, because look at Juventus. I mean, we were talking about Haaland, Mbappe. They've got a player in Vlahovic who we're going to hear so much more about in the next 10 years. So I mean, Juve are coming back. This is it's going to be a great league race. I think you should all watch the Serie A league race. I think Napoli, Milan, and Inter, right down to the last match day. I think that's where we are going. That's where we are headed. And so I think it's I'm all up for the league. And let's see tonight. I mean, I hope that we are at least alive for the game in Anfield. I will take a draw. Matlab, I just want a score draw. Let's put it that way. Yeah, yeah, no problem, no problem. Yeah, I think just while she's going for Inter 1, Liverpool 2. मतलब या अवे गोल्स काउंट नहीं होंगे. Never, सो yeah. कल तो आई डोंट नो रियल मैड्रिड का अप्रोच बहुत ही सरप्राइजिंग था कंसिडरिंग दैट लेकिन हाँ यू नेवर नो यू कैन गो बोथ द अप्रोचेस. उस्मान भाई फाइनल थॉट्स आपके लिए बारसा का सीजन एनीथिंग अबाउट द चैनल यू वांट टू टॉक अबाउट प्लीज गो अहेड. I'm really looking forward to it. I'm little bit scared also, but at the same time, it's football. जो भी हो, it's absolutely fine. अच्छा game होना चाहिए, one-sided game नहीं होना चाहिए. That's what I want. हमेशा I know कि हमारी limitations हैं, defensive limitations हैं, और सारी चीजें considering everything. All I always want in a Barca game is a fight from the team. जो कि दिखनी चाहिए, जो कि रिसेंटली दिख रही है, विच इज द बेस्ट थिंग चावी डिड कि मेंटालिटी थोड़ी सी चेंज हुई है. वी आर कमिंग बैक. हम कंसीड करने के बाद भी कम बैक कर रहे हैं, हम गेम में वापस आ रहे हैं. दैट्स व्हाट आई वांट टू सी. वी नो ऑब्वियसली वी वुड वांट टू विन, बट देयर शुड बी अ फाइट. That's what I want. 100%. Yeah, on that note, definitely competitiveness is something we all love, and that's what we are looking forward to. And of course, hoping for a great, European night again. हम इतना महीने वेट किए हैं finally, and it's really going to be competitive, weekend. हम बात करेंगे वापस. Fateh, I'll connect with you, brother, as an offline, and we'll probably have you on again, hopefully for Done. the review or Done. maybe the next leg. And Usman bhai, always welcome on the channel. You know it. Again, Thank people you. do Thank you check very out much. Daily Football Madness, and hope we are basically we gel well because I think if I'm not wrong, last time भी Champions League last match day था हम तीनों साथ में थे and maybe Yes, this yes, time yes. Indie Cop Yeah. also added so great yeah and people do check out Indie Cop as well. Until next time, take care. We'll be back. Do keep the blue flag flying high. Take care.